5, and you got the value in variable x, and then you got the actual means is 0.186. So it's a big difference. Okay, let me do one thing. Write down 1 by x, 1 by 1 upon Right. 1, no, no, not 1 divided by mean of x, 1 divided by mean of x, bracket x. So is it clear now? Yes, sir. Okay, because the actual, and do one more thing. Write down the same x is equals to r exponential 1000 comma 5. Okay, and now do the same thing, 1 divided by mean of x. Okay, so at 4.7. Okay, now you do the same for 1 million. X is Okay. equals to r x, x is equals to r x. 1 million. 1 million means one, after one you have 6 zeros. Okay, Yes, sir. comma comma 5, Comma. 5, and do the same thing, 1 divided by mean of x. Okay, so you see that you are generating the, so what you can conclude from, can anybody other than Sadia can conclude what it does it mean? I generated 100 data points from exponential distribution from the same parameter, rate parameter. Rate is packet per second or whatever the value unit is, per second unit. Uh, then I generated the same data with 1,000 points, and then in the very end, Sadia's generated 1 million data points which follow exponential distribution with the same parameter. And we are just trying to reconfirm, because you see that it's a continuous distribution. So I think you are getting the actual data you are getting is interarrival time, because exponential distribution is continuous time distribution. So actual data you are getting is, you can see above, Sadia is already showing that, you can see 0.156, 0.06. This is interarrival time data. So given rate parameter, exponential distribution generates inter-arrival time data. So this is, so whenever you are giving a rate parameter, and you are expected to get random data with mean value inverse of rate parameter, because inverse of rate parameter is what? Inter-arrival time. So that's why I am doing 1 by mean of x, 1 by mean of x, 1 by mean of x. So it's giving. So can anybody conclude that what is the impact of increasing the length of data points? Other than Sadia, can anybody else conclude what is the impact of increase in length of, is because data is still exponential with the rate parameter 5 in the first case. In the second case, again the rate parameter is 5. In the third case, when it just is the number of data points is 1 million, the rate parameter is 5, the same, it's the same data set. There's no difference in that data set. All the three data sets which Sadia has generated belong to exponential distribution, and wherever from you pick the data points, the mean is belongs to rate parameter 5, or 1 by 5 is the interval time. So can you see that what's the impact of increasing the length of data point? Anybody can, other than Sadia, can tell? Muna, can you can see what's the impact? Muna, can you listen to me? Yes, sir. So Yes, sir. But you got what we are doing. I haven't covered. I, ca- I haven't covered this topic's continuous distribution. I covered the discrete distribution, No, that's okay. uh, like like Poison. No, that's okay. I'm just trying to say that the increase in the length of data points, you see that the mean is converging. The main thing is that what I want to illustrate is that increase in the size of data samples is causes the parameters to converge. So you can see that it's 4.999
mean value near to 5, because your rate parameter is 5, so it must be exactly 5. Theoretically it must be 5, but it will never be 5, because because you are generating pseudo random number generators. So it will never be 5, but you can just do near 5. So that's the beauty of exponential distribution, all the light tail distribution, that if you increase the number of data points, their mean, the variance, and the movements will become more and more close to the actual actual ones. And Sadia, can you try any other distribution? Yes, sir. uh, Which any other distribution? any other distribution other than exponential? Can you write down r variable? Sir, I haven't tried it. Any package there? I have Or, just tried the exponential. okay, leave it this. You write r poise, r p o i s, r poise. Okay. Just write r poise. Let me see, is it available or not? Just write, so you can see. Okay, so it's available. And r poise is a continuous distribution. Sorry, r poise is a discrete distribution. It is used to model discrete data. So Discrete. just we want to check it. So it's Poisson distribution. Again, the parameters are quite similar to the exponential distribution. So just write r poise, and write down bracket 100 comma 5. Again, the lambda here is rate parameter. So can you see the difference between r x and r poise? Because in the both cases we supply the same parameter, the rate parameter, because the lambda here is again the same thing, rate parameter. And I think you can see that r poise 100. So these are the values you are getting. These data is discrete or continuous? The values Discrete. are discrete. The value are Discrete. discrete. Obviously, they are discrete values. It's not in something like in the, you can see the previous case, they were point something, they were continuous values. So these are, so Sadia, can you tell me the because you said that it's 100 and data points, and the with the rate parameter at the average rate parameter 5. So can you verify what is the actual rate parameter here? Can you take the mean value? You need to just Okay. store them again in some variable. Yes. R twice 100 comma 5. No, you do not. No, here Okay. why you're Now doing one? You do not need to do one by mean. You just need to do, it's 4.87. okay. You are not supposed to do one by mean. Why? Because it is now the actually is actually the actual rate data. So in the Okay. previous Okay. case, it was inter-arrival time. So when you inverse the rate parameter, you get the inter-arrival time. So it's already the count data. So you do not need to do 1 by x in case of Poisson distribution. In case of exponential distribution, when you find the mean, it was giving you the average mean value. And when we were inverting the average mean value to get the average rate value, which we were supplying as a function. So now you do repeat the same experiment with 1,000 data points. x is equals to r poise 1,005, and then find the mean of x, 4.88. Now do the 1 million times. Now you can do with the 1 million points, and find the mean value. Okay, so again, I think you all can see the impact that increasing the data points, when it was you generate Poisson data points with 100 with rate parameter 5, the mean was 4.87. When you increase the length to 1,000 with the same parameter of lambda rate parameter, it was 4.88. And when you again generate 1 million data points following Poisson distribution, and then it's generating with the mean value 5, then you see that it's quite close to 5.003897. And can you just type plot x? It's actually within plotting. Yes, sir. Just plotting. It will plot in the right window. I hope so.
I think we should reduce the number of points, but it will work. It will work in a while. And you should also know how to, because at the moment we have not supplied any parameter. We have to supply X label, we have to supply Y label, we have to supply the legend name, we have to supply plot name. So they have, R is very powerful, believe me, R is very powerful. And you can plot many plots, you can merge plots. Okay, so R is whether you are belong to finance, you belong to any engineering or science area, R is the beauty. R will help you in understanding many things. It is helpful in many courses. uh, is it not showing? Because No, sir. it should plot. Just reduce. No, no, don't do it. Just Okay, do okay. the plot for R poise 100. X is equals to, Okay, sir. Thanks, sir. yes, then write plot X. It's not executing, you need to execute it. Yes, sir. I need to execute it. Just do it, cancel, control C. Sir, I think it is working because I have executed the previous plot X. But I am not seeing the actual plot in the right window. It should, the new plot should appear. Yes, sir. No, I think you need to do control C because it's something is hanged here. Just get the prompt, get the prompt back. Get the prompt back. Sorry, there's uh, too much background noise in my home. There's some work going on, so you have to be like this. Sir, can I clear my window? Maybe I think yes. I it's no. Actually, you need to. I think close R and start it because your console is hanged. It's not working. yes, sir. Yes. Now you should write down. You get now you should do it. X is equals to R poise 100 comma 5, and then just do plot X. Okay, so you can see that this is the plot. This is just a raw plot of because variable X is on the y-axis, variable the actual indexing is on the right part. You can see that these are the values. You can see this, and same as that you can. Um, yes, so this just you can see the randomness in the data showing mean value 5. And same is that if you can try with the you can change the parameter and plot again. Do it X R poise. I just want to see the impact of the change of parameter. You can take it as a 1,000 and then change the parameter. Not this actual parameter. Actual parameter is lambda 5. So you can change it to 100. And I do not want to change the 1,000 value, or it is 1,000 comma 1,000. Okay, you can try this. Okay, try this and then plot. So 1,000 values with 1,000 mean. So this is, so you can see that there are 1,000 values, and and then they're all which call as a dispersed around the in the mean value 1,000. It's all about mean value. And you can see that how now I want to plot the density function or the mass function of this. So can you, I'm not sure still, can you write PMF X, PMF X, probability mass function PMF, bracket X, no PMF.
X. I don't think it's available. No. So we need to search how to plot how to plot you. Maybe share PDF. PDFX. Yes, yes. You can try this. Which function you tell me for the mass function? I have copied down the code for plotting the. Because I need to copy this function. I mean, we need to check. I've forgotten what was the how to plot the mass function. Let me find out how to find the plot the mass function of any data. This was just something very easy. Mhm. Uh, I think this is the very the easiest method to plot is this. I can just show you here. Just do it this. Depoise gives you the density. You can just copy this and hmm. So 0 x is equals to 0 to 10 is just like the we are supplying the values of x 0 to 10 and lambda the rate parameter 6, and then you can see that. And Sadia, can you do as x 0 to 100 or 1000? Okay, and then okay, so it's a scale we need to focus on. I think 100 was much more clear. Yes, sir. 100 was much more clear. So it is it that's as per scale. We the previous plot which I asked Sadia to cancel bias because the scale was getting out. We can just zoom in and get the behavior remain the same. This is the density function of the Poisson distribution, and you can see that what is the probability. For example, you can easily see that the values, the actual values on the x-axis and the depoise, the probabilities, the density probabilities on the y-axis. So you can see that the maximum I can see that the data which can from this density function, the actual data will be not more than 20, because you can see that 46. What is the probability of coming 40 in your data set? What is the probability of coming 60 in your data set? What is the probability of getting 18 in your data set? Because you can see that is the probability is very is just near zero. You can see that. But what is the getting probability of 5, of 6, or 10, 11, 12 till 20? You have some what will be the how will be the chances of data distribution, how the actual data will behave when you generate from this kind of distribution. In case of, I think in my lecture previous I tried to show the using the tool here.
So you can see that. I think we should also try to plot the most famous distribution, which is the normal distribution. Can you just type the norm, norm? Norm, yes. So just write down the norm, no brackets. So what you get? What are the parameters? Mm, Um, because oh, in normal distribution, you have to give two parameters, variance and mean. I think this is, sorry, just write R norm, because R is for R norm. Yes, yes. So it's giving you, what's it giving you? Because the distribution you have to generate, you need the word R before it. You need to append R before it. So R norm. So R norm. So just type R norm, R norm and bracket 100, and you can give mean value 1 and standard deviation 5. Okay. So you can see that the mean value, you got the normal distribution. And tell me one thing, is it discrete or continuous? that's Continuous. again. It is Mm, continuous. It is continuous. it is And continuous. is it why you getting the values as negative? Because I clearly can see that the first value is minus 1.3808, and some values are uh, Sadia, can you show the parameters? It's mean value 1 and variance is 5. uh, mean value 1. So can you actually verify what is the actual mean? Because theoretically you said to generate mean 1, but you need to store this in some variable first. Okay, and then find mm, I okay, think you this can has been plot. called. Just plot it, huh? That's okay, just plot. So this is the plot of the normal distribution with mean value 1 and the variance standard deviation 5. So because you see that standard deviation is around mean, because this is something around 1, yes, because you are supplying. So if it's around 1, so you can see that deviation is from on the both side, on the positive side as well, on the negative side as well. So that's why you can easily see that you are getting the values in the negative side as well. So this is the behavior of Gaussian distribution. And now we are interested in plotting the density function of this one. So I think you can use the same thing. Uh, you can just write down the plot and d norm and do the same thing. Just do the same thing, d norm, and you need to give the parameters, uh, not lambda. Just write a y comma y comma 1 comma 5, because we have already given 5. So this is the uh, it's not showing the bell kind of curve. We need to change the scale. Maybe do it 100. No, this is just single value. Here we need to make it 100. No, this is the parameter. I think in place of y, you can write 1 colon 1000. 1 colon, just remove y. 1 colon 1000. This is the range here. Okay, write down 1 colon 100. Hmm. So this is, you can see that. Uh, okay, just do it minus 100 colon 100. Okay, so do you got that why it is called bell curve? This is the density function of
Gaussian distribution on the normal distribution, and believe me, it is one of the most famous distribution. It Many of the internet traffic data, when you do it multiplexing or superposition, it converges to Gaussian distribution. Why? There are several reasons for this. Because Gaussian distribution is the multiplexing limit of many theorems. So I think it's very by trial and error. Sadia helped us to see the uh, at the actual full range of the Gaussian distribution. Okay, and in this data, Sadia has generated how much values? -100 to 100. Okay, with mean value 1, because it means these are how much values? The actual values ranges from Um, -100 to 100, and the data Estimated follows value. normal distribution with mean value 1 and standard deviation. And standard deviation, obviously, it's around mean. The data deviation from mean, so it's 5. So that you can easily see. So it's varying on the both sides of the axis. Okay, so and this is just the values. You can see that here. Okay, so I think you got and can you do it -10 to 10? Okay, so you can see the behavior here. Okay, so I hope it's getting clear that how because this distribution has two tail. In the previous case, when you were doing exponential distribution, it was a single tail, and but here you are dealing with two tail. Because why? Because you have two parameters under your control, mean and the standard deviation. In case of previous distribution, which was exponential distribution, you have no control of the variance, you had no control of the standard deviation. The Gaussian distribution or the normal distribution allows you to control first moment, which is mean, and also the second moment, which is standard deviation. So I hope it's very clear. I think you can just plot the -100 to 100 again. Just do it, repeat the second. Yes. So that's giving you the good idea of the behavior of the two-tailed Gaussian distribution. And do you know how to write down the Sadia, do you know how to label the x-axis and y-axis? Sorry, exactly. I do not remember. Maybe. No, it's just something very easy. Just write down, plot, same thing, repeat the same thing, and just write down. And after 5, you have the bracket here, comma. Just write the comma here. Write x lab is equals to, and inverted commas, and you can write down the word. Uh, you can see that you can use any word. Packet counts. Just write packet counts. Okay, enter. So you can see it's the you have got the, similarly you can repeat the same thing, comma, ylab is equals to, is the probability. Let's see. PDF. Ylab is just write the density function, or just write capital PDF. I cannot. Yes, just you can. Yes, you need to remove it. Just do it. Hide. Make it hide. I think don't write PDF. Just do write the density. You need to close the bracket. Yes. Okay. So this is the, and how to give the title. Repeat the same thing. You need to repeat, and I think you yes, and title, or no, I think it's a main. Main is equals to. Oh yes. Okay. You can give title or main. I think both works. Try both is equals to. Uh, mm, just you can say ABC. Or maybe it is not title. Mm, Yes.
No, I think there's the bracket mistake. You are missing the bracket. Mm, Add one more bracket. I think yes. Okay. So this way you can add the title here, any title or the name of the plot. And similarly, you should be also you can change the color of the plot. You can just repeat the same thing. Comma. Yes. COL is equals to is equals to COL is equals to uh, inverted comma, double quote. You can write red. Okay, enter. So you change the color. Okay, so you can. So sometimes when you plot multiple, this is necessary because when you plot real data and try to match distribution on it, so you need to make different colors. You need to plot real data with different color. You need to plot the actual distribution which you are used which you are trying to model using other colors. You can change the color, and then when you change the color, you can also give the legend inside. And how to give the plot name inside the plot? Need to search how to give legend. Can you? I think the plot has the function here. Just let me search r plot uh, add legend. How to add legends? I think that the plot function has the um, Sadia, can you yes, sir. I have, can you just write down this command? I have just copied here. The in the chat window, I've copied a command. Just object y2 not found. Yes, it's because it's something. Uh, So because maybe it is a graph between the two quantities. So yes, yes, here yes. I would be wrong. Mm, in a sim in a yes, because this is so lines. Mm, I can give you the full code here. I have the full code here. I can. I'm just trying to find a short way of adding a legend. I can trying to find a short way of adding the legend. How to, or you can do. What was our variable? Lines. Let me give you some code here. Plot this. Um, just execute this. Copy this, and in this case, what you will need to do. You cannot run this in here. You just no. Yes, sir. Go in the top. Go in the top window. Go in the top window. Just remove all this. Control A delete. Just remove all this and copy this. Yes, and then I can run. Okay, so so this is the way to run the entire code. If you because till now I and Sadia were just trying to run individual commands. But if you have the full code here or in some file, because and usually when you do the actual simulations, then you have to do it all in your file. So what you can see here, that x variable has stored values 1 to 10. 1 colon 10 means that x is the values from 1 to 10. Y1 is another variable which is x into x, the squared variable, okay, of the x, and y2 is double of y1, okay, 2 into y1. And then what we have done, plot x versus y1. Type b, pitch factor, we have given the pitch factor 19. These are some graphic parameters. Color color red,
x lab is equals to x, y lab is equals to y, and then lines because when you try to plot multiple uh, plots in the same plot, then first you have to execute the plot command, and then when you want to add more and more lines inside plot, then you do not need to repeat the plot command. I mean, because if you repeat the plot command again, it will override the original plot, and the original base plot will be lost. So once the first plot, because you can see that Sadia, I think you can we can do it one by one. So if you can just run first line, yes, and run it. Okay, it's run, and then run the second line, select it and run it. Mm, no, you okay? Just wait for a while. You can see that what's done now. Line we have plotted x comma y1. Okay, and then you can see that variable y1, variable y is two types, y1 and y2. Y is a squared variable of x, and y2 is double of the y1. So it's, you can see that the pch19, it defines the dot size, type is equals to b. Okay, okay, we have tried to combine all the line points by a line also. Okay, and then red color red, x lab is equals to x, y lab is equals to y. Okay, now Sadia, run the third line. You can see in the blue pitch factor 18. Okay, so you can see that pitch pch is it's not pitch, it's something called as character point. You can see it's now not circle, it's something kind of square or hexagon kind of points, and then it's the double of y1. So it's also plot using color blue, and type b, and line type is a different line type. Its line type is equals to lty is equal to 2. So there are different types of line types, you can see. So you need to differentiate between two different kind of variable behaviors using different line types and different points. You can see that as Sadia has done, the red line and the blue line, and the points are different, and the line connecting lines are also different. Okay, now Sadia, I request you to execute the last line, which is the legend line. Okay, so this is the line one, and this is the line two. So you can just add legend the behavior, and you can see, you can actually write down the complete formula in place of line one or line two. What is so you can see that the red one is line one, and the blue dotted one is line two. So this is just tricks which you all know how to add legend, because in case of these are just simple practices. I want just to show the behavior, how because you all should be expert in this kind of plotting, this kind of basic thing you should all be aware of. You should, so what I want you should be able to generate all the distribution data. Obviously, having using the web-based tool for starting is okay, but in the long term it will destroy your intelligence. You should do it yourself, generate your data yourself, just like Sadia has done in front of all of us, that she generated a Poisson distribution data, she generated exponential data, we plotted there. We also tried to plot the density function successfully, and in case of normal, you can see that it was two sides, so we tried to change the scales to get the complete view of the density function in case of normal distribution. So you something sometimes we need to go the reverse way. You should be able to plot things. You should not be fully aware of what is the actual logic behind Gaussian distribution or Pareto distribution, exponential distribution. Uh, you should you can work on it in real life, and then obviously we will obviously learn them in our course, but I hope it's very clear. So any question regarding our you can have, and I think Sadia, you can also show us the menus here in case of I think if you go toward tools in the top side, you have the tool. Sorry, yeah. Not here, and the top, yes. So we have install packages tool. You can install different kind of packages from here. Okay, and where is the
package for stats, because R has also the some stats package. Can you go to the profile? So can I search here? Yes, this yes you can. These are the packages already installed. Some packages are not installed. You can click and install. Okay, but I wanted to see some of the graphical tools already available in R. So I need to install it again, but I think you are showing it here. Can you see the plots in the top bar? Not here, not here. On the top bar next to session, not here. Yes, yes, yes. Okay, you can see. So whatever you have plotted, you can save as PDF. You can save as an image. You can also zoom it, and then you can go to session. Okay, so this all about working space. So thank you, Sadia, for your help and illustrating the basics of. It also refreshed my own working of R. So I hope it's clear. So any question regarding the operations of R? I'm open to questions. So can I stop sharing? Yes, yes, you can stop sharing. Okay, sir. Thank you. Thank you, Sadia. Okay, thank you, everyone. Thank you, Sadia, especially for showing us around the R and how to plot different kind of data and distributions. So, any questions regarding this? You need to work on it. Otherwise, just seeing, uh, you will not learn anything. So, you just install R, and R is the future. I am telling you, Mat MATLAB. If you are using MATLAB, everybody will make fun of you. I went to Imperial College London uh, uh, 2 3 years ago during my PhD, and I was trying to illustrate using MATLAB. So everybody was in Imperial College was making fun of me that using mm, paid tools like MATLAB, they make fun of you. You should be using the open source packages like R. R has overtaken MATLAB. It has overtaken all the tools of financial engineering, network engineering. All the networking experts do their simulations in R, and their data, especially data analysis. I know many of the network simulations guy who use any tool for network engineering, but the data they get from the network simulation or the real life experiment, they import in R, and then all they do all the artificial intelligence and all the kind of thing in R in their predictive models and a kind of thing. I know many of you are very much fan of Python. Python is also a very great language. So having this pair of RPy, I can write down in the chat window. Just try RPy. It's the best thing. It's a great pair. RPy. It's a Python package for you can just call R commands from Python, and so same is the case with the C. I have also a wrapper class for C language, but it's not easy to use. Python is a real beauty, so just use Python, and you can also combine R and in Python. So that's great. So any question regarding this? In the later on classes we will be using many distributions for modeling kind of things, so you need to, I would advise all of you to learn play around different kind of distributions which I have shown you in the previous class, and then we can play around with this, and then you will actually enjoy when I actually teach it. So I hope let's take a break here. Okay, half an hour break. We start at 7:30, and then we will start our normal study of the traffic analysis. Okay, so I stop recording here because then it becomes more interesting. So we will start at 7:30. So if no question, then I'm leaving. If there's any question, then you can ask me. Okay, so we can let's start again at 7:30. Okay.
I'm just trying a Jamboard. I'm not sure if you can write. Is the Google Jamboard visible to you all? Yes, sir. You can see. Can you? You have not permission. I think it's. Should I click share? Not sure if you can. Can anybody else write down on this board? Just write down your name, anything. Actually, I'm using it for the first time. I'm in the collaborative Jamboard. It's a collaborative Jamboard. You can just see or you can just write down also. Sir, we can view only. Okay, just a moment. I share it. I just shared. So Sir, can you? it is asking for the permission to allow in order to edit anything over it. Okay, okay. I have allowed the permission. Can you do it now? Share it with 20 people. So I'm not sure if you can you No, write sir. it down. No, sir. It is still in view only mode. So how can I set the permission? Mm, Let me send you a request. okay. Yes, please send the request. Just send you the request. Okay. So it means it is request based. I mean, you are sending request for writing. Yes, sir. Have you got it, sir? Mm, I did not got any request. Is it some pop down menu or I will get an email? I didn't got any request. Not sure about it. Hmm, I did not got any request. I've just this share button I can see. Renamed. I can just see more and more people joining on the Jamboard, but I from where I can see because when you um, updates. Hmm, I think the main idea is to it will come by mail. Let me check by email. Let me check on my email. Please wait. Oh yes, I got emails. I got various emails, request for access. Like Fahad, what was your name? Fahad? Fahad or Faizan? Fast feature. Fast side, I got email and please accept my access. I open sharing. Okay, so I Fahad side. So let's see if Fahad can write. Fahad, you can write now. So let me check. Just move it some mouse or anything. Just just draw some line. So circle. I create a circle. Can you see it?
What? Circle? Yes, sir. Can you see my CS541? No, sir. Look, I've written CS541 in my. You cannot see the CS541. No, sir. I see that you are writing Sir, I see. yes 541. So you can. So I want Fahad to write more on this Jamboard. This one. If you can draw a circle behind this, you can do this. Let me give access to others as well. Uh, Faizan, I Sir, give I also send request. access. I wanted that it should be collaborative Jamboard. Faizan editor. Um, I think should have Faizan editor. Faizan Anwar can also edit. And hello, can you edit Faizan? Can you edit? Just wanted to because if it's work, it will be great. Otherwise, I can teach one way, but having a collaborative Jamboard will be great. Uh, can you all see this? I've written CS541 in the background in the Jamboard. Can you all see this? Yes, No, sir. So what you are saying? You are saying just a white sheet. sir, I'm able to see CS-541. Yes. So, oh, that's okay. You can see that. Yes, you are drawing this. Faizan, is it Faizan? Sir, Arif, Arif? Sir, I'm written a F character. Yes, yes, that's great. So that's the which I want. So you can see that also CS541 and underlying CS541 you're F characters. So that's why I wanted that you should have this kind of permission. So so you got my permission, and then what was the previous one? Faizan? It was Faizan or not? Who was? Sir, Arif, Arif? Avinash. You send me the email that let me check. Uh, Arif Anis, No, sir, it is yes, Avinash. sir. Avinash. Let me give you access. Avinash, let me give you I think access. we both send in. Okay. And who else want to access now? Can you tell the name? Anybody else? Fahad? Akash. Sir, Moiz. Fahad Said is in class. Yes, sir. I'm able to write. And Akash, who? Anybody? What's Mona? We have Mona Ahmad Ali. Mona, is it Yes, you? yes, Or, yes, yes. and what's the other Yemeni students? Abdullah? Yes, yes, Abdullah. What's full name? I don't know. I don't know. Okay, Mona, I gave you the access. Just a moment. Mona, Fahad, and Avinash, I gave you all the access. So you can also Sir, my name try. is Arif. Thank you, sir. Mm. Avinash, Sir, you can. Moiz. Miss, can you write it down? I think Sir, I've also requested Hasim Bhai. yes. Yes, sir. I have also requested. I am now able to write My access is denied. Avinash. Avinash, you can write A. Okay, that's okay. So that's is any other teacher other than me using this digital dam board? Any other teacher? No, sir. No, sir. No, sir. No, Actually, No, sir. it just I think it's useful when we go to for numericals and kind of thing. But for you, it will be very difficult. But I think uh, I think has anybody this one? You can see my video. This pen. Light Yes, pen. sir. This is there's a cell inside. There's a cell inside. So this is easy to write. It's a digital pen. It's screen specific. There's also another cheat method to write down on the screen using a cotton bud. Cotton bud method, I will tell you, but it's not very effective.
So this, okay, I think I got the idea of digital Jamboard. So it's working. I was just trying to explore it, just to make it usable for you all guys. Uh, just let me close it. So coming back to our topic at hand, let's close that whiteboard. We will use it in the next class, okay? And I let me show the slide here. Okay. So we were studying this slide from Mark Provella, and we studied about the stationarity and what the stationarity means, and especially we discussed the impact of time scale on the study of stationarity, because just looking at the figures, just like you can see that on the left side it is a non-stationary time series, on the right side this is a, it looks like a stationary time series. um, uh, this conclusion is not effective. This right part can be a zoomed in version of the left one. We can use statistical measures to test the stationarity of the time series. Just looking at them, so there are two ways. Either we test the stationarity of the time series by using some statistical test, or if you insist on checking the stationarity behavior by looking from your eyes, then you need to do this, you need to replot at multiple time scales. See, time scales of millisecond, time scales of seconds, time scales of minutes, time scales of hours, time scales of days and years, and then you plot and replot your data with different time scales. Only then you can claim that, oh, this time series is stationary, and at different time scale then we can say it's a stationary. But if the stationary behavior changes with respect to time scales, then we can never say that time series is stationary. And otherwise you should use some stationarity tests, which we will discuss in later on, okay? So we were talking of the tail distribution tails. We have plotted the Gaussian distribution in the first, before Maghrib, before the break. We have plotted the exponential distribution. Sadia has helped us a lot to see. We have plotted the Poisson distribution, okay? And we saw that as soon as you increase the number of data points, the precision of your density function increases. The parameters converges. Pareto is an example of a heavy tail distribution in which there are chances of rare events. We could not find in default R the function for Pareto distribution. We were able to find, we were able to, we will use it by using different package, okay? Okay, and then there are different statistical methods exist for asking whether a data set is well described by a particular distribution. So this is if you can see my highlighting, sorry, this is asking whether data set is well described by a particular distribution is one of the key outcomes of your learning of this course. And obviously we should be able to estimate the relevant parameters, just like Sadia generated some data and then she tried to reconfirm or re-estimate the parameter. Obviously the theoretical parameter which you supply when you're starting simulation and when you do the actual estimates, they differ. But you saw the proof that as Sadia increased the length of the data sets, the parameters, the estimated parameters were converging. The higher the length of data sets, the more the estimators were converging. And the important point is that you have seen the tail of a distribution, the board, because any distribution, whether it is Gaussian distribution, whether it's normal distribution, whether it's Pareto distribution, it has two parts. One part is body of the distribution, in which major of the data lies. You have all have saw this, so seen this. And the other part is tail of the distribution. And obviously when you see the tail of distribution, tail is something remote part.
You can see that a particularly important part of the distribution is the upper tail, and obviously the upper tail denotes it models the chances of rare events. You can see that what is probability capital X greater than X. So X is something on the right side. So large, if the probability of X greater than some given X, which is very high, is very low, actual answer of this p X greater than X is very low, so it means that distribution is light tail. The large values dominate stats and performance, it will be true. But if the probability that capital X is greater than X is very, very low, it means that the chances of having large values or extreme values in your data set is very, very small. So that's a normal behavior in most of the cases, in most of the light tail distribution. But if there are large values in your data set, for example, we have seen exponential distribution, we have seen Gaussian distribution or normal distribution, there were really large values. I'm not denying that they are not large values, but the distribution is assigning very, very, very low probabilities to large values, so that's why they do not really occur in your data set. But if the distribution is such that it assigns us some probabilities to very, very large values, then obviously they will dominate. So these large values, these extreme values, their study is very important, especially in our course, because they dominate the performance. If there is DDoS attack, that will make a real disaster. If there's any kind of event, it will make a disaster for in our cases. Same happens with stock market crash. Same happens in banking kind of market. If the data has right tail, which is significantly higher than the average tail, then you need to be very careful in your modeling, because these higher values will have a significant impact on your performance. Okay, so that's why in the last point it has been written, the shape of the tail part is critically important. That's why in many, if you see the cartoons of the heavy tail distribution, there's a kind of tail, and at the end of the tail there's an elephant, because they just model the tail by an elephant. So this is an example of two density function plot. The data coming from two types of density function. These are kind of self-made, tailor-made exponential distribution, and other one is a power tail distribution, x power minus 2. The f1x is 2 exponential minus 2x minus 1, and the f2x is x power minus 2. Okay, so the first distribution, which is plotted in blue color, and the red second distribution f2 is in red color. It has been shown in the red color. So can anybody say tell me the difference between f1 and f2? The clear mathematical difference is that the f1 is exponential distribution, and the clear which I see that f2 is a power law distribution, x power minus 2. It can be x power minus 20, it can be x power minus 100. So such kind of the value in the minus part, the minus 100, minus 2, minus 1. So what's the impact? So I need to have your opinion that what's the difference between two. I think, sir, the probability of exponential distribution is higher than the square, the power. No, Mona, if you see that, tell me which curve, the blue curve or the red curve, which is decaying fast. The blue curve, the probability of the blue curve is No, higher than the red one. it's high. I agree that it's higher than red one, but you can see that the red curve. See the decay pattern. Which one falls quick? Which curve? Blue curve falls quick, or the red curve falls very quick? I want to tell you the fall pattern. Blue Blue curve curve. is blue color curve is falling quickly, and the red curve is falling very slowly. Ultimately, both of them converging to zero. Okay, that's true. We if because this is a density function, area under the curve is always
area under the curve is it's a density function, because you might have studied in your undergrad, area under the curve is always one, whether it's blue curve, whether it is red curve. In both cases, if you integrate from 0 to infinity, the area under the blue curve, the area under the red curve, it is always one, because whatever the probability experiment is, if you combine the probability of all events, it's one, because it's you are combining all chances. If you combine all chances, it's all one. So area under the blue curve is one, and area under the red curve is one. But there's a big difference in if you obtain data from blue curve, and it is a big difference if you obtain data from the red curve. Obviously, what's the big difference? Because the blue curve is falling very quickly and the red curve is falling slowly. And you can see that, for example, uh, what is the probability of having 4 if this value 4? Okay, so which distribution f1 and f2, which is assigning a larger probability to the value 4? If you can see my mouse here, this is 4 here. Okay, if you can see my mouse here, this is the value 4 here. So red one is assigning more probability to value 4, or the blue one is assigning more probability to value 4? So red one. Red one is assigning. Same goes with the value 6. Whatever go 10, 100, 1000, whatever you go till on the right side, the blue curve is ultimately 0. Ultimately it falls quickly to 0. So it's assigning almost 0 probability to the extreme values, the higher values. But the red curve is slowing very, is falling a bit slow, and then it's assigning more probability mass to the higher event. So it means that you can guess two types of conclusion from here. More extreme values in case of red curve. Okay, and then the variance will be more and more high, because you can see that there are extreme values coming in here. And can anybody tell me what will happen if I change x ki power minus 2 to x ki power minus 20, or x ki power minus 1, or x ki power minus 0.1, 0.2? What if I want to that the red curves falls more and more slow, it should be decay very slow. So what should we do with the power? Should we increase the power, or should we decrease the power? I mean, I want that this red curve should fall not very quickly, it should fall very slow, it should decay very slow. So in this case, should we increase the power x to the power minus 20, minus 200, minus 2000, or should we decrease it? X to the power minus 1, x to the Should be power decreasing. x to the power. I think you can just, this is simple. This is a simple mathematical question. There's nothing science in this. So Should be I think if you decrease the power x to the power minus 1, then the red curve will be uplifted, it will decay more slowly. And if you do x to the power minus zero point 0.9, x to the power minus zero point 0.5, x to the power minus zero point 0.1, x to the power minus 0.001, x to the power minus 0.00001, it will this kind of behavior, if you keep decreasing the power in negative, near zero, then the tail of the red curve will be more and more lifting, it will decay more and more slow. And what will happen in actuality, then it will give more and more probability to the higher events. Okay, so I can draw it down in using my whiteboard, but I think it's easy to understand here. Okay, so I hope you got the point that decreasing the power function, that x power minus 2 here 2 is the power function. If you keep decreasing it near 0, okay, then the tail will be increasing, and the chances of rare events, the chances of extreme values will be more and more and more. So this gives rise to the heavy tail distribution, or what we call as a power law distribution. In this case, the blue, I repeat, the blue one is called as, I think it's written here, your slide. The blue one is the light exponential or faster decline distribution, and the red one is heavy tail, or slower than any exponential distribution. Okay, and this is just an indicator of how do you test whether distribution is heavy tail or whether distribution is light tail. So it is there's a simple test. If you plot the
log complementary distribution functions of both data sets, one minus f2x and one minus f1x. And I think that you remember what is a CDF in the previous class. CDF is just the probability that the given value is less than x. P capital X less than equal to x. So CDF is just a simple function which shows the distribution of your data, CDF. Um, so if the log plot of 1 minus f2 or 1 minus f 1 minus f, which is complementary because f2 is f1x, so if I do 1 minus f2x, then it's a complementary CDF. If the log plot is of variable with its with its CCDF or complementary CDF, if it is a straight line with negative slope, then it means that your data has heavy tail. This is the simplest test, and this test has been proposed by Crovella itself. The Mark Crovella, in a research publication published, I think, 20 years ago or 15 years ago, he published that article, and in which he proved that how to assess if the data is heavy tail or not. He suggested that plot the CCDF complementary cumulative distribution function, take the log and also take the log of the value. If it's a straight line with negative slope, just like in here, because in the red line is the straight line with negative slope, so it means that the data is heavy tail. Otherwise, it will just fall quickly, with just like the blue line. So it's not the heavy tail. So this is just a simple test in which you can see. Sometimes in your paper, in examination, I give you data and I ask you whether it's heavy tail or not. So in this case, you need to apply such kind of test, and it's not difficult. You can do it very easily. You can do even in these days in online examination. You can do it even in R. So it's very easy. Just plot CCDF in R and then plot this data will be given. I would be very happy if the university allows me to conduct online exam in R. So that will be very great. So this is the theory here. Pre-1995 scattered measurements noted high variability in computer system workload. In 1985 to 1992, the measurement showed detailed measurements note long distributional tails in file sizes and process lifetimes. In 1993 to 1998, attention focuses especially on the approximately polynomial tail shape, which we just, so this is just, you can see that x minus 2, it's a polynomial tail shape. And then in post 1998 era, heavy tails are used in standard models. So this is just and the let me introduce you to the uh, very famous mathematical model of power tail or heavy tail distribution. So this is complete area. During this talk, I try to illustrate you the difference between light tail distributions and the capital X is a power tail if this satisfies that probability that x capital X is your random variable and small x is any given value. Okay, so it's being modeled by x power minus alpha, and here in this case you have seen that in the red curve alpha is equals to 2. Okay, so this alpha controls the tail decay. The alpha is controlling the tail decay here. So this is the point here. This alpha controls the tail decay, and the range of alpha is 0 to 2, greater than 0 and less than equal to 2. And this define, and obviously 0 to 1 and 1 to 2 range has a different kind of behavior, and we will. I will make you derive this formula here, and it's very easy to understand. And this is the limiting case here. These are the two variables here, a, b, and then so you can see them. So this is the polynomial shape of power tail distribution, and the capture of variability in alpha parameter. As you can see that alpha parameter, it is about more about variability. Just like in alpha in here, alpha was in here too. So the less the value of alpha, the more the more variability in your data. The more the value of alpha, for example 20, x to the power minus 20, x to the power minus 200, the more less variability in your data set. You can just verify it by plotting it in your R. So so uh, so this is the after this we will study very much more things on
power tail distribution. So again, I repeat, it is defined by x to power minus alpha. Okay, and this governs where alpha is a governing parameter. The less alpha close to zero, it will, the more the variance in your data set and the more the chance of extreme values, just like this function is showing probability that x is greater than x. The more this x greater than x value is, the more this probability is, the more the chances of having the rare event is high, the chances of extreme event is high. Traditional modeling, this has caused some fundamental shift in your viewpoint. Traditional modeling methods have focused on distribution with light tails, tails that decline exponentially fast, and arbitrarily large observations were vanishingly rare. Heavy tail models behave quite differently, and internet traffic behaves much like heavy tail. And arbitrarily large observations have non-negligible probabilities. And obviously, large observations, although rare, can dominate a system's performance characteristics. And that's quite common in internet traffic. And heavy tails, despite being rare, are very common. And these are some of the examples in heavy tail: sizes of data objects in computer systems, files stored on web servers. If we get all this data, what are the file sizes on various web servers on the world, and then they will follow heavy tail distributions. Data objects scrolling through internet, the flow length, I think we have talked about how to define the flow length of a TCP flow and how to define the flow length of a UDP flow. So you have now the capability to identify the flow length of TCP and UDP flow. So the flow length distribution is also heavy tail. Files stored in general purpose Unix file system is also heavy tail. IO traces of file system, disk, and tape activity also heavy tail. Process and job lifetimes also heavy tail. Similarly, node degree in certain graphs, inter-domain and router structure of the internet, inter-domain routing, the intent graph is also heavy tail. Connectivity of www pages is also heavy tail. And I was looking down at the research publication in which friend request pattern to a certain celebrity is also I mean the distribution of friend request pattern between celebrities and either normal persons also follows a heavy tail pattern. So that shows these are some of the examples of heavy tail. And I think that and that's the basis of that Zipf's law. And Zipf's law is what? Zipf's law I've tried to illustrate in the previous class, that fundamentally you can just state in a layman language that that 20% of 80% of the wealth in this world belongs to 20% of the people. So that's all about heavy tail. This Zipf's law is a kind of discrete version of Pareto distribution, or kind of this kind of theory. So I hope you got the point here. I think you can give more and more examples of heavy tail data in your life. Can anybody else give me more example of heavy tail data in real world? Some of the examples are written on the screen. I hope you can see the screen. Any other examples of heavy tails in your real life? Snow pattern, rain pattern. Any other comment? So this is just evidence of World Wide Web files. Okay, so you can see that file size on the x-axis and the log of file of CCDF, probability x greater than x is obviously, this is CCDF, complementary cumulative distribution function. Okay, so it's on the y-axis. So I am plotting this one, the the file size is 1999 data, quite old data sets. So you can see that the slope is minus 1.68. So it means that the web file size pattern approximately follows the heavy tail pattern. So this means that there are various most of the file size are very less, but there are the probability of finding a very large file is also there.
So there are also a chunk of large files on the internet, but most of the files are of very small size, as can see from this plot. Obviously, this test has been proposed by Mark Rubella, and this is again the process lifetime. Process lifetime is again following uh, mm, the heavy tail pattern. Okay, so what's the bad news? The bad news is that workload metrics following if the workload metrics follow heavy tail distributions, uh, there are the extreme variability. For example, if the power tails when alpha is less than 2, then distribution has infinite variance. Okay, and when alpha less than 1, then this means that distribution has even infinite mean. And in practice, empirical movements are slow to converge or non-convergent. I think if in the very first session today, Sadia tried to illustrate and find them. Sadia generated exponential data distribution, exponential data with 100 points, and then 1,000 points, and then 1 million points. And then at my request, Sadia also evaluated the mean value. So I think Sadia can confirm, you all have seen that the mean value was converging as soon as the we are increasing number of data points. Is it true? Yes, sir. Okay. Those of you who were seeing that in present that session, they can confirm that when Sadia was increasing the number of data points, the parameters were converging. In that case, it was rate parameter or the mean value. So in case of 100, it was not near 5. In case of 1,000, it was near 5. In case of when Sadia generated 1 million points and then estimated the mean value, so it was almost near 5 value, which was our rate mean value. So that's a normal behavior for a light tail distribution. But I want to just tell you, because some of you might be laughing that why distribution has infinite variance, why distribution infinite mean. There's nothing in this world as an infinite variance. In my PhD, there were so many, when I was talking about such kind of behavior, everybody was like surprised at what's this, because mathematically I think in next class or next to next class I can even prove you why when alpha less than 2 the distribution infinite variance, and when alpha less than 1 why it has infinite mean. Okay, I can even prove you mathematically. It's something very interesting, and this I will have to show by using some equations. I will do it, and it will be very interesting lecture for you in the next class. But at the moment I can just illustrate you that if the distribution infinite mean, then it means that the behavior which Sadia was trying to show in the first session, it will not be obeyed, because Sadia was increasing the data points and the mean was converging to actual value, because Sadia was applying the mean 5 and it was increasing the number of data points. So the ST and Sadia was also trying to re-evaluate the actual mean, the what or we call it sample mean. So it was converging to the theoretical mean. So you all have seen this. But what does an infinite mean means? If the data follows infinite means, then it means that practically speaking, there's no thing as infinite in this world. Practically speaking, there's nothing. But in actuality, uh, if you increase the number of data points and then you try to evaluate the mean again, the mean will never converge. Okay, if you increase 100 data points, 1,000 data points, 10,000 data points, 1 million data points, 100 million data points, 100 billion data points, how much data points you include, and then you take the mean value, they will never converge. In each cases you will get a surprisingly different answer for the mean value. They will never converge. They will you will get random answers for mean value for the same distribution. Even distribution is same, but you will get very random answer for the mean value. It will never converge. So it's totally hopeless case. So you're trying to increase your data set. You are trying to get more and more. You are trying to generate more and more values, just in a hope that mean will converge. You are trying to reevaluate mean again and again and again, but it will never converge. It will never converge. So if this is the behavior, then it means that your data has infinite mean, practically speaking.
So, so this is the practical interpretation of the distributions which has infinite mean. It means that simply stated, simply what you can state, that you increase the that number of data points, the mean, and you estimate the mean value will never converge. If the distribution has finite mean and finite variance, in that case, just like in what Sadia showed us, that in that case increase in number of data points will cause the mean and the variance to converge. Okay, so that's why it's written here. In practice, empirical moments are slow to converge or even non-convergent, just like in here, because if the mean is infinite, variance is infinite, then the moments will never converge. Some people, I have seen some research articles in which they claim that and that human behavior has a lot of parameters which is close to infinite mean. For example, when we view a web page, so when we view a web page, then there's a parameter called as uh, uh, think time. So think time, I have seen many papers, and I evaluated in one of my paper as well, in think times are very good model by distributions which has infinite mean. So like if we view a page, if we download, if I click on a web page and I'm just looking at the web page and just thinking, there's no traffic involved. So can anybody tell me that why a web page viewing time or user think time is modeled by infinite mean distribution? Any random guess, any input, that why user web page think time, uh, I'm a browser, I'm browsing a web page, so I just get a data how long I see a web page. Why this think time user level metric, why this think time has infinite mean? Us has a kind of symmetric level way of think times, we are all humans, or we should have a different level of think times? Different level of think times. So it means that can we model a distribution or even a single person, if we even do not compare, if we do not compare, because Asad is a different guy, and other guys are different, we are all different fellows, so our we should not compare apple and orange. Even if I'm Asad, I keep a record of my think times. So can a mean value of think time, uh, for example, I can say that, oh, Asad's think time is this value, 2 seconds. So is it logical to say? No, sir. Why? Because uh, we cannot count the think time. No, think time. Like if I say, what is your name? Fast sake. Fast sight, if I say that fast sight think time is 5 seconds, it means that I'm trying to say that whatever fast site web during a browsing, fast site stays as a web page for average of 5 seconds. It can be more than 5 seconds, it can be less than 5 seconds, but average fast site stays on a web page for 5 seconds. So is it true to say, or for any person, can I say like this? Is it a justifiable metric? I think no, sir. Yes, because there's more variance in fast side time think time. There's more variance in Asad's think time. There's more variance in Muna's think time. So we cannot say like this. So that's why think times. Those of you who will try to, for example, if I give you because this is something very important to understand. Because in your final exam, I judge your understanding of stochastic process by using the similar example, very basic case, very big, just like this one. That my question is that, can Fahad's think time be, can I represent Fahad's think time but by just giving you an average? Okay, Fahad's think time has an average of 5 seconds. So which distribution you will use to model this distribution? So obviously, naturally speaking, if I have given you just one parameter, not two parameters, just mean value, you will try to immediately catch in those distribution which has just one parameter.
and then you will see, oh, exponential distribution has one parameter, which is average value. So you will just try to impose exponential distribution to model Fahad's think time, and so that will lead to entire wrong type of modeling, because when the parameter is not representing the actual behavior, then the distribution will never be useful for actual modeling, because Fahad's think time or Asad think times cannot be quantified in terms of a just a mean value. Okay, just if I say that, okay, Asad's think time is 5 seconds, and Asad's think time variance is 2, or I just say Fahad think time average is 2. Is it okay? I'm trying to be more realistic now. I'm giving you two parameters. One is think time average value, and one other is think time variance. Obviously, in this case, you will try to catch normal distribution, but don't go to distribution itself. First try to see that is this quantifying think times with mean and variance for a certain user, for me or for Fahad or for anyone. Is it good idea? Is still not a good idea, because the variance can also be infinite. The variance can also be not converged. My think time mean value cannot, if you evaluate the think time of my behavior, if you evaluate the think times of Fahad's behavior, it's not going to model actually, because Fahad's think time, my think times are quite they have some web pages we stay very long, and some web pages we just stay it very quickly. So it's just so there's no way to use mean value to present this data. Mean value will never represent this kind of data. Same happens in many of the data sets. Similarly, the variance is also not convergence. Whatever you do, you cannot represent, oh, a such thing time variance is this. I cannot just impose, okay, this is a uniform variance value, 2 millisecond, or a standard deviation value 2 millisecond or 3 millisecond. Asad will not deviate from this think time more than this value. So imposition of a standard deviation on your think time, I repeat, imposition on a standard deviation value on your think time is also not realistic on your think time. And that's quite common with your, especially your human generated traffic. That's quite common with human access patterns are being modeled by the heavy tail distribution. So I hope you get an idea why we use distributions with infinite mean and infinite variance for modeling this kind of power tail data sets. So in the next class, you will get more and more understanding of what is meant by distribution with infinite mean, infinite variance. I'm just trying to illustrate what's the practical implications. In the next class, we will get and to characterize system performance, because these when the distribution has infinite mean, infinite variance, then it means that it is a power tail distribution, and then attention must shift to distribution itself, or attention must be paid to the time scale of analysis. So these are the two main questions here. Like for example, this is on the left side there are observations, okay, some of the values given, and on the right side the sample mean has been plotted. So and this is the data generated from a power tail distribution with alpha is equals to zero point 0.8. And when you see alpha is equals to zero point 0.8, you can see that when alpha is less than equals to 1, distribution has infinite mean. So this particular case belongs to when the distribution has infinite mean. And obviously when the distribution has infinite mean, then obviously it will have infinite variance, because when the mean is infinite, then obviously all the second order metrics, third order moments, they all will be infinite. It's very clear. If the mean is infinite, then the variance will also be infinite. Okay, so this is the case of infinite, the data set on the left side, in which you can see observations and the value on the left side, and then the running mean on the right side. So can anybody summarize what these two graphs are showing
On the left is just the raw data, and on the right, this is the running mean has been plotted. Can anybody summarize this? What it is meant in this? Very simple case. A very simple case. Yes, please. Any answer? It's very simple case. What's the difficulty here? On the left side is a raw data, and the right side is the sample mean has been plotted. So that's what this is what I want to illustrate. Uh, okay, just seeing at the raw data, can you see why it is heavy tail? Why this is calling as a power tail? Because you can see that there are various most of the values are small, but can you see the rare events, the peak Yes, values? sir. You can see, I can see 1 2 3 4 5 6 big peaks in your data, and then one big peak is reaching even 1200, the other big peak is reaching almost 700, other and 600, and 4 500. So there are some peaks here, and these, if we model this kind of with light tail distribution, then we cannot accommodate this kind of big peaks. And obviously, if we ignore these peaks, then you will ignore some of the uh, uh, your performance will be affected. So we need to model this kind of uh, peak values. So what you can see that there are just in case of 10,000 data points, in case of 10,000 data points, five five or six peak values there are there, just 5 or 6 peak values are there, and they are very very high values. So you can see what's the impact on the observation running mean. On the right side of plot is just nothing. On the right plot, just the running mean has been plotted. If I remove these 5 peaks, what will happen on the right plot? Yes, please. It's a simple basic question. I think even a student of metric or inter can tell me. If I remove these five, So the running mean will become a flat line. yes, the mean will be straight line, and it will be the more you data point you'll plead, uh, I think the mean will convert to straight line very slow, very easily, very 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 quickly. But what's happening now? You can see that still the majority of the data set is still below 200. The majority of the data set is still below even 100. But just in this 10,000 data set, there are just 5 big values which are making a problem, and such a big problem that mean is not converging. It's sometimes is jumping to a big value, then decreasing to a big value, then converging to a big value. This process is neither first order stationary, it is neither second order stationary. The mean value is not stabilizing. When the mean value is not stabilizing, how can you compute variance? So that's the way. But obviously, this is the real case. We do not want to ignore these kind of peaks. So that's is the practical implication. So having said this, let me address our NOC engineers. Uh, the firewall, various firewalls of Cisco, Fortinet, they show us some of the mean value parameters. Uh, are they realistic? I think we have NOC engineers from Bangalore, we have NOC engineers from British Petroleum, we have several networking guys in this class who are, can they confirm the firewall logs which show you in the dashboard and the mean value they show you, are they realistic or not? Because you all have experienced Cisco, Fortinet, Juniper. These firewalls, they capture traffic, they show the mean value of session time, they show mean value of count data, they show mean value of session count data, user login times, they show various in your dashboard, they just computing the mean, showing you the mean value. So is it realistic or not? They do actually represent the actual data or not, these firewall logs? Yes, please.
Any knock engineer who can confirm the firewall uh, logs are realistic or not? Yes, sir, they are realistic because the traffic pattern is not constant. But if it is showing a mean value of certain metric, so because firewall, like in this case, this can be your packet count data. On this case, it can be a packet count data on the left side. Okay, so if this is your packet count behavior, so the firewall will show you the mean value during the day or during the busy during using any period. So will it be realistic? Okay, just tell me, this kind of behavior on the left side, which is in the left graph, is it common in your real networking data? Just tell me one thing. This type of behavior which you are saying, is it common in your networking data? Yes, Yes, sir. sir, it's common. It's common. So if it is common, then can you say if your firewall is evaluating mean value and then just showing on your dashboard? So is it the true reflective or of your actual data? As you can see here on the right side, the sample mean plot is not converging. So I hope you guys think on this, that these firewall logs, although technically speaking, I'm not questioning the performance of any firewall or anything, but I want to make you understand that what firewall logs show you, what firewall log summaries show you, the dashboard show you, they are not reflecting of actual static process behind data. And I know some of the firewalls, they do some kind of AI and they do some kind of data analytics, but to a limited extent. But such kind of true identification of the stochastic process behind the actual data, this no firewall till now does this. And why it does not do this? Because this is something more about understanding of the data. The firewall network managers care more about traffic management, like you guys, they you want to control these traffic. You want, the main thing is that you want that these peaks pass through, these peaks does not make congestion in your network. This is your main task. You do not want to model this kind of traffic, but this is the thing that, but sooner or later this behavior, it will have a lot of impact in your understanding of network traffic. And that's why I try to illustrate in my research publications, in my research grants, and I always work on emphasizing that modeling of the traffic and underlying stochastic process will always lead to a better a design of the firewall or better design of the traffic shaping policies. So that's a very simple case. That's a very simple case in which I've shown you the data set and I tried you to the running mean. So I hope it is clear. And um, and this is we can talk more on this. This is autocorrelation. Uh, you know that what is autocorrelation, because it is something about dependence in your data. So is TCP/IP responsible for autocorrelation, or is TCP/IP responsible for heavy tail access pattern, or the infinite mean, infinite variance? So network traffic is a superposition of flows. The clients get many requests, it goes through server, and then it comes back to. So we need to identify, this is very simple diagram, everybody knows this, that your all traffic is carried by TCP/IP, and then it comes back so that's the reason. So this is just a model of on-off flows of internet traffic, that this is the on duration, this is off duration, or you can see the think time. Okay, so this is, so when we superpose this kind of traffic, so what happens? So whether there's autocorrelation or not, so this is going to be our next topic. So I'm not going to teach this at the moment, because but I would like that you go through these slides, and then in the next it is showing you heavy multiplex traffic, bottleneck traffic. So
you will get a lot of understanding in this slide. And what is long range, and the main idea to get understand in the next class is the theory of long range dependence. This is very interesting and very relevant to our practitioners. So I hope it's a bit clear. So we finish class here now. I hope you got some of the things which I'm trying to illustrate here, because this LRD theory is very great, interesting theory for especially for network practitioners. And I would like that please read these slides, and I would share more data regarding LRD theory of networking in the next class. So I hope it's clear, and let me close this. So I'm open for any question. I hope it's clear. So I would advise that you all read the PPT which I have already shared. You will find many networking good examples, especially about traffic analysis, and we can come back next week. Meanwhile, I will also try to share some statistical background material to you so that you can understand. So I hope it's clear, and we finish the class now, and I'm open for any question. Attendance I've already taken, and you can leave the class. And I'm here for any question. Sir, uh, the data Yes. from the ISP tier 2 to tier 1 is superposed, Yes. and the incoming traffic to the access layer, you can say, is Mm. splitted traffic. Yes, that's true. Outgoing traffic superposition and incoming traffic suffers The uh, technique, splitting. how come the technique of splitting affects the modeling behavior? Your voice is cutting. Can you repeat again? How, there must be some splitting technique at the ISP end Mm. that force the data to the access location. Yes, actually, uh, all of these things at ISP are handled by routing protocols. These all things are handled by routing protocols, and but our mandate here is to understand that at the traffic level. We want to understand at the traffic level that if there's a multiplexing or demultiplexing being involved, so what to do. And at ISP end, what I can say for surety, I think our network engineers can answer the better way, because there are routing protocols involved in there. They define the routing path, and then whatever the path of the destination IP address is, they forward the packet to that port. And then obviously when many of the such packets go there to a certain interface, they will have a multiplexing, and some will have a demultiplexing. So that's common in upload traffic and download traffic. So it can be said that a particular splitting technique used at the ISP end can affect the modeling that we adopt at our access layer. Yes, it is true that if the ISP is following some kind of traffic shaping strategies or some kind of thing. For example, in my case, I'm operating an ISP. I have prioritized all of the traffic of online video, Zoom, G Suite, and all of the VoIP traffic. I'm prioritizing. So I'm trying to, even at router interface, I can give more priority to this kind of traffic. So this kind of thing affects especially the queuing kind of delays. But when we talk of routing strategies, they normally remain static. ISPs have ISP know where to send the data by using the routes which we have configured. In my case, at NAD, I have some network internal to the NAD, some network external to the NAD. So I have my routes defined here. So, and even for external network, for example, most of the universities are belong to PERN network from HEC. So that traffic follows the PERN route. So that does not go to the public internet as by default. That goes to the PERN network, and then it goes outside. So there are some policies which we define, but in my case, I need to investigate the process of superposition
and decomposition at a particular interface. Inside, you need to zoom in. So when you zoom in and analyze the traffic superposition or decomposition at one interface, you need to do this. Do not look at the complete picture of global internet at the moment. First you need to, because if you look at the complete internet pattern or certain autonomous system, we cannot, because it's governed by routing protocols. So we cannot say that, oh, routing protocols are multiplexing traffic. It's true that routing protocols route traffic, okay, but we cannot define a routing protocol by multiplexing. There are different metrics which are used to configure routing protocols, and I have not seen any routing protocol which is being defined or being configured by level of multiplexing. Okay, so whatever traffic comes, they just look at the destination IP address and the route traffic. My mandate here in this course is to make you understand the traffic at a certain interface. And obviously that interface means interface, the fiber interface of a router or switch, in which one router or one switch. I'm not looking at the global picture. I'm looking at just one interface and how much traffic is being multiplexed and how much traffic is being demultiplexed from that interface. So that will help you the capacity planning of one interface. And if you understand the capacity planning of one interface, then you can zoom out and then you can understand the requirement of the entire network. Okay, sir. Thank you. And you can see this kind of modeling. If you want to read this, you can read my paper which I published on the role of variable distribution in traffic modeling. I analyzed DSL network, Ethernet network, wireless hotspot network of a New Zealand ISP, and their multiplexing and demultiplexing point. I did actually the same thing which you're talking. I investigated the traffic from tier 2 to tier 1. Both superposition and decomposition. You can read my paper. I think I have already shared that paper, so you can see that I did the same analysis in using the three different network: DSL network, wireless hotspot network, Ethernet network, and their multiplexing and demultiplexing. And at packet level, flow level, and session level, I did all the three things. So you can find a detailed answer in my paper. Okay, sir. एक बात है कि can I talk in Urdu? I think yes. I think class is finished now, so you can talk in Urdu. So, If students from Yemen do not mind. sir, Mona, we are आपने talking in Urdu, no problem. जी तो Yeah, जी. Yeah, you can. Mona, you can leave the class if you have any question, you can ask me. You can leave the class. Okay, And sir. Mona, if you have any problem regarding understanding of the lecture, you can just call me. You have my cell number, or you can just send me the message. Okay. Okay, Shala. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सर आपने भी लाइक आपकी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज और स्टडी जो है आपकी मास्टर लेवल की, तो जी, वो जी। लाइक कंप्यूटिंग के अंदर ही होगी। तो जी। ये चीजें हैं सर, ये मैथमेटिकल ग्राफ और ये प्लॉटिंग, स्टिल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप कोई रिकमेंड करेंगे कि कोई ऐसा रिसोर्स इंटरनेट के ऊपर जहाँ से हम ये इंटरप्रेट करने में हमें ये आसानी हो, लाइक ग्राफ्स हो गए और ये जिस तरह आप जो प्लॉट करके बताते हैं, तो बहुत ही कंसाइज वे के अंदर, ताकि यहाँ जितने इंजीनियर्स हैं जो आपके सवाल पर मौजूद है, तो वो आपको आंसर कर सकें। देखिए ना, आप मैं अभी तो ये कह सकता हूँ, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है मेरा पेपर। जी सर। अब देखिए ना, इसमें मैं नीचे आऊँ और ये अब देखें, ये टेबल 1 क्या शो कर रहा है। टेबल 1 में समरी ऑफ पैकेट फ्लो सेशन लेवल, इथरनेट नेटवर्क, डीएसएल नेटवर्क और वायरलेस हॉटस्पॉट नेटवर्क, और नीचे क्या है, ट्रैफिक। ये सिर्फ देखना, सिर्फ पैकेट काउंट डाटा है। ये सिर्फ मैंने डाटा सेट्स को वो किया है, मैंने समराइज किया है मैंने। ठीक है ना, ये पूरा, ये लेफ्ट कॉलम देखिए, आप देख रहे हैं आउट गोइंग पैकेट, फिर क्या है, इनकमिंग पैकेट, फिर थर्ड कॉलम क्या है, आउट गोइंग फ्लोस, और फिर इनकमिंग फ्लोस। तो आउट गोइंग क्या है, ये सुपरपोजिशन है, और इनकमिंग क्या है, ये डीमल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है ना, तो ये चीज, अच्छा, इसी में तो ये मैंने सिंपली डाटा सेट को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है ना, और ये पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड की आईएसपी है, उसका मैंने सारा डाटा लिया था जब मैं वहां पढ़ रहा था। और ये फिर मैंने गुडनेस ऑफ, आप देखिए, मैंने वेबल, एक्सपोनेंशियल और लॉग नॉर्मल, ठीक है ना, ये मैंने आप कोलमोगोरोव स्मिनॉफ टेस्ट मैंने अप्लाई किया विद पी वैल्यू, और फिर देन क्वांटाइल मैचिंग टेस्ट। ठीक है ना, ये मीन वैल्यू का एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है। ये बहुत ही लॉजिकल सा टेस्ट होता है, इसमें कोई तोप साइंस नहीं है।
ठीक है, ये मैंने इसके टेस्ट साबित किया कि इतना ट्रैफिक वेबल से कितना मैच कर रहा है, इतना ट्रैफिक एक्सपोनेंशियल से कितना मैच कर रहा है, इतना ट्रैफिक जो है लॉग नॉर्मल से कितना मैच कर रहा है। सेम गोज विद डीएसएल वाले हॉटस्पॉट आईएसपी को नेटवर्क, और सबकी मैंने ना ये मैंने टेस्टिंग की है मैंने। ये इंटर अराइवल टाइम फॉर सेशन, आउट गोइंग फ्लोज आप देख लो, इनकमिंग फ्लो देख लो, ठीक है, ये सब मैंने बहुत डिटेल में काम किया है। और अभी देखो कि ये मैंने पूरी कोशिश की है कि ये मैंने इंडेक्स फॉर डिस्पर्शन फॉर इंटरवल आईडीआई कहते हैं, ये भी काइंड ऑफ वेरिएंस शो करता है। रेड में देखो, पूरा रेड में क्या इथरनेट नेटवर्क है, पूरा ब्लू में क्या है डीएसएल नेटवर्क है, ये सब ग्रीन में क्या है वायरलेस हॉटस्पॉट नेटवर्क है, और आईएसपी कोर नेटवर्क ये आपका राइट पर है, जहाँ पर ये मल्टीप्लेक्स हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से डीमल्टीप्लेक्स हो रहा है। तो मैंने यही चीज मैंने देखी थी मिसिंग है हमारे रिसर्च के अंदर, हमारे पेपरों में ये चीजें मिसिंग थी कि इतना क्लियर इन्वेस्टिगेशन पेपरों में मुझे नहीं मिला था, तो इसी पर मैंने और काम किया। फिर ये और चीजें मैंने क्यूइंग पर काम किया मैंने, तो मैंने काफी, ये खैर मेरे ये लोग थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, तो काफी मतलब और आपको समझे कि इस पेपर में कितनी ये लोग खाल उतारते हैं, ऐसे पब्लिश नहीं हो जाता ये, ठीक है। तो ये तो मेरा पेपर तो मतलब मैंने कंप्लीटली इस तरह की जिस वन पेपर ऐसे मेरे तकरीबन ऐसे मेरे 7-8 पेपर पब्लिश हो चुके हैं अब तक। तो इसमें आपको मतलब देखिए रिसर्च वो होती है जो कि बेसिक हो, जो कि इट कवर्स बेसिक एस्पेक्ट्स। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आप मेरा पेपर पढ़ोगे ना, तो आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको ज्यादा किसी मैनुअल से अच्छे या किसी और जगहों से आपको ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। तो आई कैन जस्ट से सीधे कि आपके जो जैसे ऑपरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको इन चीजें मिलेंगी, मेरे इनके जवाब मेरे पेपर में मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी इंफॉर्मेटिव आपने अपना इस विषय लिखा है, और रीडिंग दिस कंप्लीटली नहीं कर सकते, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। और हाँ, ट्राई ट्राई करेंगे, बट इसमें ये होता है, देखिए मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट रिसर्चर था। पाकिस्तान से जब मैं न्यूजीलैंड गया तो कितने मसले पेश आए वहां पर। एक मेंटल मैचिंग लेवल जो हमने मास्टर्स किया था, आप लोग भी कितनी मुश्किल से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ना कितना मुश्किल काम है, ठीक है ना। आई कैन नॉट, आप लोग मुझसे सही से बातें नहीं कर सकते ना, मैं आपको सही से पढ़ा सकता हूँ, ये और एक चैलेंज आ गया है, ठीक है। लेकिन ये कि हमें ये आजकल के दौर में चीजें करनी है, तो बस अब यही कि आप जितना मटेरियल अवेलेबल है आपको उसको पढ़ो। ये बात फैक्ट है कि नेटवर्किंग की रिसर्च के अंदर जो है ना, ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग या मैनुअल या सीसीएम की जो बुक्स होती हैं वो अलग कहानी है, और जो एक्चुअल साइंस है नेटवर्क की, इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो यही तो है कि जो नेटवर्क ट्रैफिक के पीछे जो अंडरलाइंग स्टोकेस्टिक प्रोसेस है आपने उनको समझना है। आपने ट्रैफिक को नहीं समझना कि राउटिंग क्या हो रही है। इसके लिए आपका अलग कोर्स है, आपका राउटिंग एंड स्विचिंग का कोर्स अलग है पूरा, ठीक है ना। आपका इंटरनेट सिक्योरिटी का कोर्स अलग है, उसमें सब बातें होती हैं, प्रैक्टिकल की बातें होती हैं, प्रैक्टिशनल बातें होती हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं होता स्टोकेस्टिक प्रोसेस से। लेकिन अगेन आप देखो कि जो मेरा भी रिसेंट पेपर पब्लिश हुआ है डीडॉक्स अटैक मॉडलिंग पर, तो उसमें मैंने ये तो किया, मैंने एआई बेस्ड मैंने मॉडल अप्लाई किए हैं, और मैंने लिमिटेड फीचर्स यूज करते हुए मैंने कम से कम फीचर यूज करते हुए मैंने डीडॉस अटैक पकड़े हैं यूजिंग। और मैंने डाटा कहाँ का लिया, मैंने कनाडा का डाटा लिया, आई यूज द डाटा फ्रॉम कनाडा सीआईसी। आप चेक करिए कनाडा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सीआईसीडी, ठीक है ना। तो इनका डाटा मैंने लिया है, तो इन्होंने डीडोस अटैक पब्लिश किए हैं, तो उनको मैंने बेस बनाकर मैंने डाटा लिया है, और मैंने इसको मैंने आई ट्राइड टू अनकवर द हिडन स्टोकेस्टिक प्रोसेस बिहाइंड द डाटा सेट। तो दैट्स व्हाई दैट पेपर गॉट पब्लिश, और एक पेपर अभी मेरा पब्लिश हो चुका है, इंशाल्लाह प्रिंट में आने वाला है। तो जो मेरा वे ऑफ वर्क वो ये है कि आई I'm a practitioner guy as well because I also operate a NOC here in NAD, but I also try to uncover the underlying stochastic process behind the distribution, behind the traffic. लेकिन आपकी बात सही है कि हमारे जो नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको इस चीज में बिल्कुल गज नहीं है, उनको चीज बिल्कुल गज नहीं है कि पीछे स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या है। दे जस्ट वांट कि इनका नेटवर्क कंजेस्टेड ना चले, बस इनकी रिक्वायरमेंट होती है। दे वांट टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ सर्विस, दे वांट टू इंश्योर क्वालिटी एक्सपीरियंस, दे डू नॉट। लेकिन इस चीज को इंश्योर करने के लिए ना वो उन चीजों की तरफ नहीं आते कि जो कि ट्रैफिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस पर नहीं आते। आप लिंक की कैपेसिटी बढ़ा दोगे, आप फाइबर आप 10 गिग की जगह 100 गिग की फाइबर लगा दोगे, लेकिन आप जो है ना 10 गिग की फाइबर या 1 गिग की फाइबर पर रहते हुए ट्रैफिक को शेप नहीं करोगे, ट्रैफिक को सही से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, किस ट्रैफिक प्रायोरिटाइज करना है, किस ट्रैफिक को कैसे उसको समझना है, वो हम काम नहीं करते। मैं जब न्यूजीलैंड पढ़ रहा था तो मुझे एक प्रोफेसर मिले थे जो कि एमआईटी से आए थे, ही वाज एन इंडियन, दीपक गोसल उनका नाम था। तो ही वाज उन्होंने एक टास्क मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका में आईएसपीज ट्रैफिक कैप्चर करती हैं, पूरी दुनिया में ट्रैफिक कैप्चर करती हैं, हम जो बात कर रहे हैं ये भी कोई ना कोई ट्रैफिक कैप्चर कर रहा होता है, इंडेक्सिंग होती है, सारी एजेंसीज ट्रैफिक कैप्चर करती हैं, कम से कम उनका प्रोफाइल लेती हैं। तो ये कहते हैं कि क्या ट्रैफिक डाटा बहुत जमा हो जाता है, ठीक है ना। और सिंपल से सवाल है वो, उनका सवाल, उन्होंने मुझे टास्क ये दिया कि
कि एक डाटा सेट जो कि हमने 10 सेकंड के इंटरवल पर लिया है, यानी कि हर 10 सेकंड बाद कितने पैकेट आ रहे हैं, हर 10 सेकंड के अंदर कितने पैकेट आ रहे हैं, हर 10 सेकंड के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो मोबाइल फोन कंपनी होती है, डाटा ऑपरेटर होते हैं, वो डाटा सेट स्टोर करते हैं। उन्होंने मुझे टास्क दिया, सिर्फ ये चीज गिवन है, अ टाइम सीरीज इज बीन गिवन, जिसमें डाटा सेट गिवन है आपको, के वैल्यूज हैं, उसमें वैल्यूज हैं एक्सेल फाइल के अंदर, के पैकेट काउंट डाटा पर 10 सेकंड, हर 10 सेकंड के अंदर कितना डाटा आ रहा है, मिलियन से अकाउंट आ रहा होगा। उन्होंने मुझे टास्क दिया कि ये डाटा हमारे पास है, मुझे इसको जूम इन करके बता दो कि व्हाट इज द बिहेवियर एट 1 सेकंड। ये टास्क मैं आज तक नहीं कर सका, मैं अभी तक मैं इसमें नहीं, इतने मैंने पेपर पब्लिश कर दिए, आई एम ए डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मैं ये काम नहीं कर सका अब तक। सिंपल सा सवाल है ये, आप समझे मेरा क्वेश्चन? देखें, अगर कोई मुझे टाइम सेकंड दे दे डाटा, 1 सेकंड पर, कि 1 सेकंड के अंदर कितने पैकेट आ रहे हैं, और मुझसे पूछे कि 10 सेकंड में कितने आएंगे, तो मैं तो 10 पॉइंट को जमा करके निकाल लूंगा ना मैं। 1 सेकंड डाटा गिवन है मुझे, कि एक ऐसे टाइम सीरीज गिवन है कि हर सेकंड का डाटा गिवन है, 1 सेकंड में कितना पैकेट आ रहा है, 1 सेकंड में कितने आ रहे हैं, अगले में कितने आ रहे हैं, अगले में कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। और मुझसे पूछे कि मुझे बताओ 10 सेकंड में क्या बिहेवियर है, तो मैं क्या करूंगा, हर 10-10 के ग्रुप को ऐड कर दूंगा, तो मैं 10 सेकंड मिल जाएगा। कोई बात है, मुझसे पूछे कि 100 सेकंड में क्या बिहेवियर है, तो हर मैं 100 वैल्यूज को ऐड करूंगा, एक वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट 100 को ऐड किया, एक और वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट 100 को ऐड किया, एक और वैल्यू आ जाएगी, तो आई विल गेट द बिहेवियर 100 सेकंड। तो जूम आउट करना तो बच्चों का काम है, जूम इन करना किसका, जूम इन करना अभी तक नहीं कर पाया मैं। सर आपने कहा था वो ट्रांसवर्ल्ड के अंदर जो नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन होती है 10% भी हाई अगर चले जाए तो वो बहुत अलार्मिंग होती है। और आपने जिक्र भी किया था खालिद नदीम साहब जो थे ट्रांसवर्ल्ड के, तो उनसे भी कोलैबोरेट किया है इंटरनेट ट्रैफिक मॉडलिंग के हवाले से? उनको से कोई कोलैबोरेशन करिए इंटरनेट नहीं, ट्रैफिक मॉडलिंग? सारे गोविंद साहब के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा बड़े मेरे उस्ताद हैं, उस्तादों में से हैं, सारी बातें बड़े वो नेटवर्किंग हमारी मार्केट में वो लोग हैं जो कि हम लोगों को, हम जैसे लोगों को इज्जत देते हैं, वरना तो आपको पता है कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, भगा देते हैं लात मार के। वो बेचारे बहुत इज्जत देते हैं, वो बहुत इन्वॉल्व है मेरे साथ, और मेरे पेपर पढ़ते रहते हैं, और मुझे पेपर भेजते भी रहते हैं वो, कि असद यार ये पेपर पढ़ के बताओ मुझे। तो वो इतने माशाल्लाह बहुत हैं। और आजकल तो खैर उन्होंने मुझे लगाया हुआ है नॉक्शन के ऊपर, इंटेलिजेंट राउटिंग प्लेटफॉर्म पर, कि नॉक्शन टेस्ट कर रहे थे। तो लेकिन ऑब्वियसली ये मसला जो इंडियन प्रोफेसर ने मुझे बताया कि अमेरिकन आईएसपीज को ये रिक्वायरमेंट है कि वो लोग दे स्टोर डाटा एट द इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, ठीक है ना, और उनको चाहिए बिहेवियर एट 1 सेकंड। तो अब जाहिर बात है कि एक बेवकूफ आदमी उनको मशवरा, इसका सबसे ज्यादा बेवकूफाना आंसर क्या है, उनका बेवकूफाना आंसर ये होगा ना इसका कि भाई जब अमेरिकन आईएसपीज को ये इंटरेस्ट है कि उनको डाटा 1 सेकंड पर चाहिए, तो भाई स्टोरी करो 1 सेकंड के ऊपर, 10 सेकंड पर स्टोर क्यों कर रहे हो डाटा। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है दिस इज अ स्टूपिड आंसर, आई कैन नॉट से लाइक दिस, बिकॉज अगर वो बेचारे डाटा अगर 1 सेकंड में स्टोर करने बैठ जाए, तो टेल मी कि कितना बड़ा स्टोरेज, उनका डाटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितना बड़ा हो जाएगा। दे डू नॉट वांट टू डू दिस। ये थोड़ी कोई साइंस है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इज दैट कि आपको मिनिमल रिसोर्स में काम करना है। तो अभी तक उनका ये सवाल कि डाटा सेट गिवन है आपको 100 सेकंड के ऊपर, 100 सेकंड पे या 10 सेकंड पर, उसको मुझे जूम इन करना है, मुझे 1 सेकंड का बिहेवियर चाहिए, मुझे उस काउंट डाटा से मुझे 1 मिली सेकंड का बिहेवियर चाहिए। तो ये काम मैं आज तक नहीं कर सका। मैंने अपने मेरे अंडर 3 पीएचडी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाए अब तक। मैंने कहा सिंपल सा सवाल मेरा हल कर दो, लेकिन वो जूम इन नहीं कर पा रहे। मैंने एक 4 ईयर ट्रांसफॉर्म बेस्ड मैंने प्रपोजल दिया था, मैंने इस पर मैं काम कर रहा हूँ, 4 ईयर ट्रांसफॉर्म से मैं इसको डीमल्टीप्स करवा दूंगा। लेकिन ये कि वो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, मुझे थोड़ा मुझे कुछ आइडियाज हुए हैं कि इसको, लेकिन एक स्टिल ये, क्योंकि ये तो इट्स समथिंग डिवाइन, आई कैन नॉट जस्ट जूम इन इनटू अ टाइम सीरीज, कि भाई कि ये एक टाइम सीरीज जो कि कैप्चर की गई है 10 सेकंड के ऊपर, हाउ कैन आई से दैट की गई है, उसको जमा करके मैं 100 सेकंड का निकाल लूंगा बिहेवियर, उसको जमा करके मैं 1000 सेकंड का निकाल लूंगा, लेकिन उसके अंदर ये गायबाना डिवाइन इल्म नहीं है मेरे पास। ये अल्लाह ही को पता है कि नीचे कितना बिहेवियर है। गॉड नोस के एक टाइम से जो कि 100 सेकंड पे कैप्चर की गई है, उसका 1 मिली सेकंड का बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, इट्स नथिंग बट इट्स द साइंटिफिक चैलेंज, ये साइंस है ना, करके दिखाओ। ये चैलेंज मुझे 2 से 3 साल हो गए, अभी तक नहीं कर पाया मैं। चैलेंज बहुत बेसिक सा है, इतना बेसिक सवाल है ये कि 100 मिली सेकंड की टाइम सीरीज को जूम इन करना है, मुझे नहीं कर पा रहा मैं। नो बडी, ये कोई भी नहीं कर सकता भाई, ये इतना किसी के इतना सवाल तो सिंपल सा है, लेकिन ये करना इट्स नॉट अ समथिंग ट्रिवियल, बच्चों का काम नहीं है कि आपने जूम इन कर दिया, डिकम्पोज कर दिया।
आपको पूरा जो उस टाइम स्केल पे ट्रैफिक का बिहेवियर है उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा नीचे टाइम स्केल बिहेवियर में। और आपको ये भी नहीं पता कि जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस फिट आ रहा है 100 मिली सेकेंड 100 सेकंड के ऊपर, क्या वही स्टोकेस्टिक प्रोसेस नीचे भी फिट आ रहा है? नीचे ट्रैफिक जो जूम स्केल के ऊपर वो स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी है। तो इट्स रियली इम्पॉसिबल टास्क फॉर मी स्टिल, बट स्टिल इज चैलेंजिंग। आई टेक द चैलेंज, मैं इस पर काम कर रहा हूँ एंड आई होप आई विल ट्राई टू फाइंड सम एटलीस्ट सम सोल्यूशन टू दिस। तो ये एक मैंने आपको टास्क दिया है कि हमारे ऑपरेटर्स को भी इस चीज की फिक्र होनी चाहिए कि बेसिक बेसिक चैलेंजेस होते हैं, दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। So, sir, wishing you all the best. आपको भी ये चैलेंज Also, है, आप करो ना इसको उसमें टास्क लो कि एक टाइम सीरीज दी हुई है 100 सेकंड के ऊपर, उसको जूम इन करो। ये कर लेंगे, मैं 100 में से 100 नंबर दे दूंगा मैं। ये कर लो, मैं आपको 100 में से क्या, मैं बाकी टीचरों के हाथ जोड़कर आपको उस पूरा एमएस निकलवा दूंगा, पूरी 4 GB दिलवा दूंगा आपको मैं, 4 GB है। ये मेरा काम कर दो। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता ये काम। एक टाइम सीरीज जो 100 सेकंड पर है। मैं उस वक्त मुझे अच्छी तरह से न्यूजीलैंड में बर्फबारी हो रही थी, उसने मुझे रात को बुलाया अपने अपने कमरे में, बोला कैसा तुम बड़े काम कर रहे हो, तुम्हारा पीएचडी खत्म होने वाला है, मेरा ये काम कर दे कि ये 100 सेकंड की टाइम सीरीज है जो कैप्चर की गई है हर 100 सेकंड पर, उसको उसको कह रहे जूम इन कर दो। पॉसिबल नहीं है भाई, नहीं पॉसिबल है, इंसान का बच्चा नहीं कर सकता ये। लेकिन वो कह रहा है क्योंकि उसने कर भी लिया होगा अब तक ये मसला। लेकिन है कि एक टाइम सीरीज को जूम आउट करना आसान है, जूम इन नहीं कर सकते भाई, जूम इन करना नहीं है हमारे बस की बात, नहीं है। एक ट्रैफिक जिसका जिसका हमें नहीं पता कि उसका बिहेवियर क्या था, जो मतलब जो चीज हमने लॉस कर दी, ठीक है ना। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप 1 सेकंड पर, अगर अमेरिकन को इतना इंटरेस्ट है कि 1 सेकंड पर टाइम सीरीज का क्या बिहेवियर है, तो वो कैप्चर ही स्किल पर करें। वो हाई स्केल पे कैप्चर क्यों कर रहे हैं? वो भी नवाब के बच्चे हैं। लेकिन वही ना, हाँ, वो दे वांट टू यूज मिनिमल रिसोर्सेज, वो ट्रैफिक कैप्चर करें, क्योंकि जाहिर बात है कि जितना ज्यादा टाइम स्केल होगा उतना ज्यादा आपका डाटा सेट छोटा होगा। दे डोंट वांट टू वेस्ट रिसोर्सेज। अब उसी में कह रहे हैं कि यार ये डाटा है इसके अंदर जूम इन कर दो। यार ये बच्चों का काम है ही नहीं। इसमें जब तक आपको अंडरलाइन प्रोसेस नहीं पता, अंडरलाइन क्या चीज है, तो उस पर मैंने इनको ये बोला है कि सर ये इम्पॉसिबल है जब तक आप डाटा के बारे में कुछ और चीज नहीं बताएंगे, डाटा के मतलब किस तरह के। लेकिन ही कैन नॉट टेल मी एनीथिंग। इंटरनेट ट्रैफिक टोटली अनकंट्रोल्ड है, इंटरनेट ट्रैफिक किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। इंटरनेट ट्रैफिक आप खुद देख रहे हो, अभी मैं आप खुद देख रहे हो कि हैवी टेल चल रही है नीचे, एक्सट्रीम वैल्यू चल रही है। ये तो मामला को अगर मीन वैल्यूज कन्वर्जेंट होती तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता। ना मीन वैल्यू कन्वर्जेंट है, ना वेरिएंस कन्वर्जेंट है। तो भाई ये इंसान का काम नहीं है, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई। हाँ सर, वेरिएंस कन्वर्ट हो और इसको हम गेज कर सकें कि कितनी वेरिएंस है, आई थिंक यही गोल होना चाहिए। हाँ मतलब कुछ चीजें ऐसी है कि जो आपको अगर ये जैसे ये एग्जांपल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे, क्योंकि इसीलिए मैं हर जगह में बोलता भी हूँ इस केस को। साल मेरे को मैंने बोला भाई सर ये प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं वाकई ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये कि उन्होंने हंस कर टाल दिया, कहने कि यार ये तो बिल्कुल सी वो बात है, इम्पॉसिबल सी बात है कि। लेकिन ये कि ये है, ये क्वेश्चन है, ये कैसे टाइम सीरीज को जूम इन करना है। और मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ नेटवर्किंग के लोगों का नहीं है, ये क्वेश्चन दुनिया में हर तरह के लोगों का है। स्टॉक मार्केट वाले उनको भी ये चीज फिक्र पड़ी रहती है कि अगर अगर स्टॉक मार्केट का अगर सालाना ट्रेंड दे दें और और आपको वीकली ट्रेंड नहीं दिया, तो वो लोग चाहेंगे ना कि वीकली ट्रेंड मिल जाए। अगर ट्रेंड नहीं दे, किसी ने आपको दे दिया कि भाई कि 1980 से लेकर 1990 तक ये ट्रेंड था, सालाना ट्रेंड दिया, वीकली ट्रेंड नहीं दिया, और पूछ ले भाई स्टॉक मार्केट का वीकली ट्रेंड कितना था, ऑब्वियसली ये कोई कर नहीं सकता। ये तो गायबाना इल्म तो अल्लाह के पास है ना। लेकिन फिर भी कोई पूछे तो कैसे कि उसको डिकम्पोज करेंगे टाइम से, कैसे उसको हम कहते हैं जूम इन करेंगे, अंदर कैसे जाएंगे? ये इम्पॉसिबल है। ये सवाल जो है ना, ये इट्स अ साइंटिफिक क्वेश्चन, इट्स नॉट ओनली फॉर नेटवर्किंग गाइस। लेकिन ये है, मैंने इसका हल निकाला है। मैंने आप सबने शायद आपने पढ़ा है फोरियर ट्रांसफॉर्म, जी बिल्कुल, हमने लाइक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना। तो मैंने इसका एक हल निकाला है कि मैंने कहा कि जब अमेरिकन हजरात, अच्छा ये उनको पसंद भी आया थोड़ा सा, लेकिन ये अभी तक मुझे नहीं पता कि उनको कितना फॉलो किया। मैंने बोला भाई कि आप इसको ना जब आपके दोस्त हजरात अमेरिकन आईएसपीज जब ट्रैफिक कैप्चर करती हैं तो ट्रैफिक कैप्चर ना करें, वो ट्रैफिक लें और उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट स्टोर करें। दैट विल हेल्प यू डिकम्पोज। दैट्स अ गुड आंसर। लेकिन है कि ये स्टिल इस फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी डोमेन चेंज के हमेशा मसले आते हैं इस डीएफटी बेस्ड मेथड के लिए। तो लेकिन इससे जस्ट मुझे इसके अलावा अभी तक कोई साइंटिफिक रिसर्चर मुझे इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा अब तक। इस फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है जो उसको किसी भी टाइम सीरीज को डिकम्पोज करके उसके अंदर जाना है ना, तो उसके अंदर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का प्लीज साथ लो।
तभी वो आप अंदर जा सकते हो, वरना वरना किसी इंसान के बच्चे में ये मजाल नहीं है कि किसी अननोन टाइम सीरीज के अंदर जूम इन कर ले, ये इंसान की बस की बात नहीं है जब तक कि उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म ना पाता हो। ये मेरा अपना प्रोपोजिशन है अब तक के बारे में। मैंने ये थीसिस मैंने अभी तक मैंने कहीं पब्लिश नहीं किया, लेकिन मैंने उन इंडियन साहब को मैंने बता दिया है, ही एग्रीड विद दिस, उनका ईमेल रिप्लाई अभी तक मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि ये लुक्स लॉजिकल, लेकिन उसके बाद ना मैंने काम किया ना उन्होंने काम किया, लेकिन ये चैलेंज तो है। तो लेकिन अगेन मैंने आई वुड लव कि कोई मेरे साथ इस पर काम करे। ये चैलेंज है कि कैसे टाइम सीरीज डाटा को डिकम्पोज करना है, अंदर जाना है, उसको जूम इन करना है। आई थिंक मेरा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है, जो लोग सुन रहे हैं। इस वक्त भी क्लास में 19 लोग बैठे हुए हैं, हम 2 बंदे बात कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि प्रॉब्लम जो है ना ये पता होगा आप लोग। यस सर। सर काइंडली ये आज का लेक्चर कल आप अपलोड कर दीजिएगा, ताकि ये कि हमारे अरे यार लिमिटेड टाइम को वो जो मैं है भूल वो जाता हूँ हमेशा। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं नहीं, असल में मैं कर दूंगा। असल में ये अभी रिकॉर्डिंग फिनिश करूंगा ना, तो ये 2-3 घंटे बाद तो आती है, 2-3 घंटे बाद ना ये मेरे अकाउंट में आएगी रिकॉर्ड होकर। उसका तक उस वक्त तक मैं भूल जाता हूँ। तो आज भी लोगों ने काफी मुझे रिमाइंड कराया। नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं कर दूंगा रिकॉर्ड। लेकिन बात ये कि रिकॉर्डिंग से मुझे नहीं लगता कोई रिकॉर्डिंग सुनता है। मेन चीज तो लाइव लेक्चर है। आप लोग लाइव तो बैठो ना सही तरीके से। मेन चीज तो लाइव लेक्चर, आप बात कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बहुत, लेकिन बहुत कम लोग बात करते हैं। लाइव लेक्चर तो रिकॉर्डिंग में मजा क्या है, रिकॉर्डिंग में कोई मजा नहीं है। सर दूसरी चीज ये पूछनी थी कि आपने एक और टास्क बताया जो सालिक मुबीन के साथ आप डिस्कस करते हैं, नॉक इंटेलिजेंस के साथ, वो क्या चीज है? वो नॉक्शन यार, वो उन्होंने लगाया है नॉक्शन के ऊपर। जैसे नॉक्शन, नॉक्शन क्या चीज है? नॉक्शन आईआरपी, इंटेलिजेंट राउटिंग प्लेटफॉर्म। नॉक्शन जो होता है बेसिकली इट इंश्योर्स डिले गारंटी एंड लॉस गारंटी बिटवीन पब्लिक इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पर आप यू कैन नॉट इंश्योर लॉस गारंटी। नॉक्शन की कीमत जो है ना वो $200 मिलियन की तो की कीमत है नॉक्शन की। आप सर्च करो नॉक्शन, NOCTION। अच्छा, ओके सर। पीटीसीएल ने इसका वो कर भी लिया, पीओसी। पीटीसीएल ने पीओसी कर भी लिया, लेकिन खरीदा नहीं क्योंकि बहुत बहुत महंगा है। मैंने इसकी फिजिबिलिटी थोड़ी बहुत की हुई है। कुछ ओपन सोर्स टूल्स हैं। सालिगुबेन की टीम जो है दे आर रेडी टू गिव मी बीजीपी रूट्स। मैं पढ़ से भी मेरा मेरा ग्रुप काम कर रहा है, मेरा एनसीसी का जो ग्रुप है, और हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं। हमने ओपन बीएमपी टूल है जिसके जरिए हम ये कुछ काम कर सकते हैं। पीएम अकाउंटिंग भी टूल है। हम कुछ हाइब्रिड करके हम बनाएंगे एसडीएन बेस्ड सोल्यूशन। लेकिन कि अगेन ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इसके लिए तो आपको अपना एक राउटर ऐसा चाहिए जिसके अंदर कंप्लीट राउटिंग टेबल हो। और असल में मेन मसला पता है क्या है, रिवर्स ट्रैफिक पर कंट्रोल नहीं है। फॉरवर्ड ट्रैफिक पर मैं पाथ देकर मैं आई कैन फाइंड आउट path with the minimal with the guaranteed SLA with the guaranteed delay और guaranteed loss। रिवर्स ट्रैफिक पर कंट्रोल नहीं है। ये फैक्ट है, रिवर्स ट्रैफिक पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वही हम मार खाते हैं। नॉक्शन 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 किस बाप ने बनाया, किसने बनाया कि ये दे गारंटी रिवर्स ट्रैफिक कंट्रोल? ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं। मैं खुद हैरान हूं अब तक कि नॉक्शन वाले कैसे रिवर्स रूट पर ट्रैफिक को डिले और गारंटी दे रहे हैं, कि देते हैं ये, और इसीलिए कामयाब है ये। कैसे किया ये मुझे नहीं पता, यही मुझे करना है। मेन चैलेंज है रिवर्स ट्रैफिक पर दे आर डूइंग गारंटी ऑफ डिले एंड गारंटी ऑफ लॉस, और बाकी और भी मैट्रिक्स। आप नॉक्शन की वीडियो देखो ना, आपको पता लग जाएगा कैसे कर रहे हैं ये नहीं पता। ये तो चैलेंज है, इसलिए तो इसकी $200 मिलियन कॉस्ट है इसकी। सर नॉक्शन फ्लो एनालाइजर की बात करें जी, आप? आईआरपी, जी जी, आईआरपी, इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म। और आपको पता है इसकी क्या एप्लीकेशन है? अगर ये चीज हो जाए ना, हमारे एनडी में एक और मेरे कोलीग्स हैं, वो काम करते हैं बेचारे रोबोटिक टेली ऑपरेशन पर, इंटरनेट पर काम करते हैं, टेली ऑपरेशन करवाते हैं। उनका ये मसला रोना है, अबे यार इंटरनेट पर डिले आ गया तो बेचारा पेशेंट के वो अगर छुरी चल रही है रोबोट के जरिए, बंदा बैठा है कोरिया में और तुम टेली ऑपरेट कर रहे हो, उसका क्या हाल होगा? वी नीड ए गारंटीड सिस्टम। इंटरनेट वॉज नॉट डिजाइन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग कि इंटरनेट पर चलाओगे टेली ऑपरेशन, लेकिन लोग कर रहे हैं। उनको कौन रोके? क्योंकि इट्स द चीपेस्ट मीडिया। अब इसके लिए कि देन कम द बिजनेस लाइक नॉक्शन। अच्छा, इसमें एक और टूल है, पैकेट डिजाइन। नॉक्शन और पैकेट डिजाइन, ये दो दुनिया में दो बड़े बड़े वेंडर हैं कि दे गारंटी, क्योंकि इंटरनेट इज, एवरीबॉडी नोज दैट इंटरनेट इज बेस्ट एफर्ट डिलीवरी नेटवर्क। एवरी आई थिंक जिसको भी आईपी का अलिफ भी पता है ना, उसको पता है आईपी इज क्या है। आईपी इज बेस्ट एफर्ट। आईपी में कोई गारंटी शरंटी नहीं है, ठीक है ना। वो टीसीपी में हम डाल देते हैं सीक्वेंस नंबर करके, कुछ ना कुछ गारंटी ले आते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक टू इंश्योर एंड टू एंड डिले गारंटी, एंड टू एंड लॉस गारंटी, इसके लिए इंटरनेट पे ये चीज इंटरनेट पे नहीं है। फॉरवर्ड पाथ में तो कर भी लो, फॉरवर्ड पाथ के अंदर रिवर्स पाथ में कौन लगा देगा भाई? रिवर्स पाथ में किसी के बाप का कंट्रोल नहीं है रिवर्स पाथ में। सॉरी, मेरे बड़ी बड़ी लैंग्वेज मेरी वो होती है, ब्लंट लैंग्वेज होती है। रिवर्स पाथ में भाई किसी का कंट्रोल नहीं है। हाउ टू इंश्योर? नॉक्शन कैसे कर रहा है रिवर्स पाथ में कंट्रोल, डिले कंट्रोल और लॉस कंट्रोल?
आई एम सरप्राइज्ड, लेकिन कर रहा है। चलो अच्छी चीज दिया आपने पढ़ने के लिए, मतलब स्टडी करेंगे सर। नौक्शन की वीडियो देख लो पहले जरा, 2 मिनट के अंदर अंदर पता लगेगा नौक्शन क्या कर रहा है। तो वीडियो स्क्रीन की वेबसाइट पर वीडियो दी हुई है नौक्शन की वीडियो, लेकिन समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन ये कि ऑब्वियसली, लेकिन ये कि हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि नौक्शन का क्या है। इस सालिक मुबीन साहब और आपके जो पीटीसीएल में जो आमिर तोफैल साहब होते वेरी एलिगेंट एंड इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है। हमारे टीचिंग के लोग मिलते ही नहीं ना, इंडस्ट्री में जाते नहीं, तो वैसे इतना मुझे पता है इसमें कम से कम मैं 2 पेपर तो निकालूंगा नौक्शन पर, जब मैं काम करूंगा मैं 2 पेपर पब्लिश हो जाएंगे इतना है। तो लेकिन अच्छा, ये चीज है आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को शायद आप लोगों को क्या देना होता है आजकल, वो आपसे वो मांग रहे हैं ना, आप लोगों से क्या मांग रहे हैं, वो प्रोजेक्ट क्या है, वो आईएसपीस। सर क्या मांग रही है आईएसपीस? आप लोगों से आजकल क्या मांग रहे हैं लोग, आपके इलाइबश वगैरह जो मांगते रहते हैं ना, वो आईएसपीस। आईएसपी ले लो इस टॉपिक पर। अभी अभी इस क्लास के अंदर 3 मैंने बिग चैलेंज बता दिए आईएसपी के लिए, ले लो आईएसपी, इस पर करो काम। तीन सर आईएसपी मैंने बता दिया आपको, बात तीनों जो है, आईएसपी ले लें। सर रिवर्स बात की आपने बात की, एक सिंगल आईएसपी के कंट्रोल के अंदर अगर सिंगल आईएसपी के कोर से जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक पास हो रहा है, तो वो मेरा ख्याल है कि रिवर्स पाथ जो है वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है। अब वही ना, ये चीज मुझे समझाएं, कैसे कह सकते हैं इसको, कितना किस हद तक नॉक्शन जो है, नॉक्शन का डिवाइस लगाएंगे, वो फॉरवर्ड पाथ पर और रिवर्स पाथ पर आपको दे देगा कि इतना मैक्सिमम डिले आएगा, इतना इतना मैक्सिमम लॉस आएगा। फॉरवर्ड पाथ पर तो फिर भी समझ में आता है, रिवर्स पाथ में कैसे कर रहे हैं, मुझे आई एम नॉट क्लियर। अगर सेम आईएसपी के कंट्रोल में है तो नहीं, हाँ, नहीं, वो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो लेकिन नक्शन इज रनिंग बिटवीन टू डिफरेंट, दूसरा एंड पॉइंट जो है ना वो कहीं और लगा हुआ है, वहां से भी मतलब आईएसपी सेम नहीं है ना, मसला तो ये है। आईएसपी सेम होती तो फिर तो ठीक है, फिर तो इशू ही नहीं था। यहाँ पर आईएसपी भी डिफरेंट है, डोमेन भी डिफरेंट है, आउटर में सिस्टम भी दरम्यान में डिफरेंट आ रहे हैं। तो उस केस में कैसे रिवर्स पाथ कंट्रोल कर रहे हैं, ये चैलेंज है। और आप जो नेटवर्किंग के लोग हैं वो मुझे ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या चैलेंज है, कैसे नक्शन ने ये काम कर कैसे करके बैठे हैं ये जवान के बच्चे। तो ये आप लोग बताओ ना, ये चीज ये वो चीज है जो मेरा एरिया नहीं है। मैं तो आई एम नॉट अ टेक्निकल, मैं तो एक साइंटिफिक रिसर्चर हूँ, ठीक है ना। आई एम मोर क्यूरियस, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चीजों में क्यूरियस हूँ कि मुझे बताओ ना यार, ये नॉक्शन, ये इन जवान बच्चों ने क्या किया है कि रिवर्स पाथ कंट्रोल कर लिया, मतलब आई एम टोटली सरप्राइज्ड। पब्लिक इंटरनेट पर रिवर्स पाथ कंट्रोल कर रहे हैं जवान के बच्चे। अबे यार, मतलब मैं तो हैरान हूँ कैसे कर रहे हैं। फॉरवर्ड पाथ पर मुझे समझ में आती है, वो काफी हद तक कंट्रोल होता है, रिवर्स पाथ पर कंट्रोल कर रहे हैं यार ये ऑप्शन वाले। और कॉस्ट है टेक्निकल ना, पर्सन तो तो आप उसके हैं, लिए यही वजह है। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी। जी। मैं कह रहा हूँ टेक्निकल तो है आपकी एक्सपर्टीज, जी। बीइंग डायरेक्टर हम्म, आईटी ऑफ आईआईटी। जी जी। नहीं मतलब, आप कह रहे हैं ना सर, मैं टेक्निकल नहीं टेक्निकल नहीं, टेक्निकल वो तो नहीं मेरे अंडर टेक्निकल टीम है, लेकिन लेकिन वो तो मेरे पास एडिशनल चार्ज है। लेकिन है कि इंडस्ट्री का डायरेक्टर आईटी होना अलग कहानी है, एक प्रोफेशनल जैसे ट्रांसफर जैसे जा रहा है। आई वुड लव टू डू इंटर्नशिप, मैं पीएचडी हूँ, लेकिन आई वुड लव टू डू इंटर्नशिप एट ट्रांसफर और पीटीसीएल। मुझे इंटर्न रखवा दो, मैं सीखूं वहां पर मैं। वो यूनिवर्सिटी का कैंपस लैन देखिए, आप देखें यूनिवर्सिटी का लैन चलाना एक बहुत ही कंट्रोल नेटवर्क है। यूनिवर्सिटी का लैन चलाना बहुत आसान काम है, यूनिवर्सिटी का लैन चलाना। ये वतीन या आप लोग के जो इदारे हैं जैसे ये बैंकिंग सिस्टम है, कितनी सिक्योरिटी होती है, ये मुश्किल है। एनडी के अंदर इतना मुश्किल नहीं है नॉक कराना, सिंपल है। हमारे तो बहुत ही ट्रैफिक का पाते थ्रू करवाते हैं, एडी ऑथेंटिटी करवाते हैं, बस इतना है। बहुत सिंपल नेटवर्क है हमारे एनडी का। जो हाँ, ऑपरेशन का जो चीज सीखी मैंने मतलब सर्वर लेवल पर सॉफ्टवेयर पर मैंने काम किया है, ईमेल सर्वर पर हम चाह रहे हैं ओपन सोर्स, हम चीजें हमने बहुत सारी चीजें हमने सिस्टम जो हमारे पोर्टल है, सब चीजें हम चला रहे हैं अपना, खुद चला रहे हैं, ठीक है ना। हमने क्लाउड पर कुछ नहीं डाला, सब चीजें हमारे डेटा सेंटर में चल रही है, डेटा सेंटर हमारा पूरा अपना है। लेकिन एक पूरा जिसे कहते हैं ना कि एक फुल फ्लैश ट्रांजिट नेटवर्क ऑपरेटर, वो नहीं हूं मैं। आई एम नॉट अ ट्रांजिट नेटवर्क ऑपरेटर एंड आई वुड लव टू लर्न द डायनामिक्स ऑफ ट्रांजिट नेटवर्क लाइक वतीन टेलीकॉम, लाइक लाइक ट्रांसफॉल्ट, लाइक पीटीसीएल, ठीक है। ये चीज है, ये मैं वो बंदा नहीं हूँ। आई वुड लव टू बी लर्न लाइक दिस, लेकिन मैं इन लोगों से टच में रहता हूँ।
तो फिर ऑब्वियसली देन सीखता रहता हूँ लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। नॉक्शन पे मेरे पास ग्रांट, रिसर्च ग्रांट भी है मेरे पास, तकरीबन कोई 20-25 मिलियन की मेरे पास ग्रांट भी है जो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। जो नॉक्शन जैसे नॉट लाइक नॉक्शन बट इज समथिंग अलाइक नॉक्शन। एक मैंने पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन में भी अप्लाई की हुई है फंडिंग, तकरीबन 15-20 मिलियन की फंडिंग है, पता नहीं मिलती नहीं मिलती मुझे, इसी टॉपिक पर है, टू इंश्योर एंड टू एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस ओवर पब्लिक इंटरनेट इन पाकिस्तान। तो ये मेरा टाइटल है, देखें क्या होता है। To ensure end-to-end quality of service इन where पाकिस्तान, मतलब इन पाकिस्तान नेटवर्क, टू इंश्योर एंड टू एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस ओवर पब्लिक इंटरनेट। ये टाइटल है जो मैंने प्रपोजल सबमिट किया हुआ है मैंने। great, great. मतलब ये टाइटल कितना सिंपल है, लेकिन इसको करना आसान नहीं है। इट्स नॉट इजी टू डू लाइक दिस, टू इंश्योर एंड टू एंड क्वालिटी सर्विस। क्वालिटी सर्विस की बातें सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी से पूछो ना कि एंड टू एंड कैसे कर इंश्योर करोगे, तो करके दिखाओ एंड टू एंड। सर तो इट्स इस नॉट पे इजी। ऑलरेडी इस चीज के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, या हम अभी इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आए? देखिए एक चीज, व्हाट इज इनोवेशन। एक चीज जैसे जैसे एक मेरे दोस्त ने वेंटिलेटर बनाया है, क्यों बनाया वेंटिलेटर, वेंटिलेटर बने हुए, ठीक जी। है, हमें हमें जरूरत है भाई, हम कब तक ये, अगर नक्शन अगर बनी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि समबॉडी शुड स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग इन इंडिजिनियस, ठीक है ना। कभी ना कभी तो, और देखें, हाँ इतना मुझे पता है, जैसे भी मेरे दोस्त से सवाल किया था कि आप डायरेक्टर आईटी हैं, ये हैं वो हैं, तो इतना मैंने देखा है कि यार ये चाहे सिस्को हो जाए, जूनिपर हो जाए, ये क्योंकि मैं तो ओवरऑल नेटवर्क का इंचार्ज हूँ। अब किसी मेरे नेटवर्क, मेरे अंडर पूरी नेटवर्क की टीम बैठी हुई है, ठीक है ना, जो सारे लड़के सीसीएनए सिस्को बड़े अच्छे लड़के हैं, मेरे अंदर पूरी नेटवर्क की टीम है। वो हर वक्त रोना होता है कि इस फायरवॉल का लाइसेंस एक्सपायर हो गया, इस फायरवॉल का एक्सपायर हो गया, अब पूरा डब्बा उठा के फेंक रहे हैं पूरा। ये होता है ना, आपके साथ भी ये होता है कि पूरा डब्बा उठा के फेंको, लाइसेंस एक्सपायर, चीज बेकार हो गई। तो यार जब तक हमारी अपनी एफर्ट नहीं होगी, हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है ना। कब तक हम जिसे कहते हैं ना कि साइबर सिक्योरिटी एरिया के अंदर, ये नेटवर्किंग एरिया में, वी आर जस्ट अ कंज्यूमर सोसाइटी, वी आर जस्ट अ बॉक्स पुशर। बॉक्स लिया, पुश कर दिया, लाइसेंस एक्सपायर, ले भाई वापस डाला, नया खरीदो, पूरा तो लिया। कॉस्ट का तो कोई सोचता ही नहीं है ना, बस करता है तो चीज होता है। इंडिजीनियस रिसर्च का हमारे कल्चर नहीं है। और दूसरी बात है कि वो जैसे अभी मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने अपना सीम सोल्यूशन पुश किया एनसीसीपीएल के अंदर। ऐसे नहीं किया बहुत, वहां जाकर मैं सीढ़ी में बैठा, उनको पुश किया, सेठों के आगे बैठा, ये थोड़ी देखा कि मैं पीएचडी हूँ, ये हूँ तो मैं जाऊंगा नहीं। मैंने वहां पर बहुत कोशिश की, तो तब जाकर मेरा सीम सोल्यूशन जो है वहां पर एनसीसीपीएल में डिप्लॉय हुआ। अब आज हालत ये कि पीएसएक्स हो जाए, सीटीसी हाउस से, इन सब पर भी यहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज तो हमें ऑर्डर अभी आ ही गया है। तो एक एक एकेडमिक को ना अपनी वर्थ प्रूफ करनी होती है इंडस्ट्री के अंदर कि उसका इंडिजिनियस डेवलप सोल्यूशन चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि दे ट्रस्ट इसको मोर देन मी, दे ट्रस्ट जूनिपर मोर देन मी, क्यों ब्रांड है ना, ब्रांड है, वो काम कर रहे हैं वो लोग, उनका एक क्रेडिबिलिटी है। तो अगर सिस्को क्लास एक्सपायर हो जाएगा तो हमारी हमारी इंडस्ट्री जो है वो उसको लाखों रुपए देकर नया लाइसेंस ले लेगी, नया सोल्यूशन ले लेगी अपने। हाँ, जो यूनिवर्सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं मुझे जैसे लोग, उनके सोल्यूशन में कभी कभी ट्रस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं होता। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज टू डू एन इंडस्ट्री एक्सपोजर, वर्क इन इंडस्ट्री। अब ये है कि इंडस्ट्री भी हमें सपोर्ट करे, और वो फिर हमारी चीजों को, हमें पीओसी का मौका दिया जाए ना। मुझे जब पीओसी का मौका नहीं दोगे तो मैं कैसे अपने अपने अपना टैलेंट प्रूफ करूंगा। ये मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, पेपर पे जो मेरे पेपर पब्लिश हो रहे हैं, ये मेरा एक साइड की मेरी मेहनत है। ये पेपर पब्लिश हो गया, इम्पैक्ट फैक्टर में हो गया, मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा उसकी खातिर, लेकिन कि क्या होगा, ये मतलब पाकिस्तानी इंडस्ट्री क्या होगा, ठीक है ना। तो ये चीज होनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग के कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इंडस्ट्री में लेकर आ जाए। सर होपफुली इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो पेपर्स आप पब्लिश कर रहे हैं, और आई एम डेफिनेटली श्योर के जब आप कॉर्पोरेट में कंपनीज के अंदर आप इंट्रोडक्शन पीओसी आपकी होती है, और डेफिनेटली हम लोग आईटी सेक्टर से हैं, तो हम भी कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो नॉलेज, जो रिसर्च है, उसके ऊपर हम अपने लोगों को, जो हम बॉक्स सेलिंग पे और सिस्को और जो अदर ब्रांड्स हैं जिनके में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बस उसको चेंज करने के लिए सोचते ही नहीं है, बस उसी को आपने केबल चेंज कर दिया या उसका कार्ड चेंज कर दिया, दैट्स इट। हम इतने डिपेंडेंट उनके हो चुके हैं। तो आई थिंक यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्क, क्योंकि जो आपके पेपर्स मैंने जो रीड आउट किए हैं और जो अभी तक मैं उनको समझ पाया हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है आपकी। तो वी लव टू इंट्रोड्यूस यू वेयर वी हैव टू
वी आर गोइंग फॉर वर्क और अदर, हमारे भी अपने रिसोर्सेज कम्युनिकेशन लोड्स रहता है, तो डेफिनेटली ये होना चाहिए। हमें खुद इनोवेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक डोर देना चाहिए डेफिनेटली। हाँ नहीं, ये बिल्कुल फरहान साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि होना चाहिए। कुछ अच्छा, कुछ लोग फेवर कर रहे हैं और दे ट्राई टू गिव अस, और कई कई जगहों पर मैंने प्रूफ किया भी है, मेरे और कोलीग्स भी हैं प्रूफ करते हैं, लेकिन वही ना कि ये ट्रेंड है कि हमारी इंडस्ट्री अभी तक हमारे बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हुई है। मतलब वो उसमें कसूर हम लोगों का भी है ना कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी जजमेंटल, लेकिन ये कि बहुत सारे पीएचडीज ऐसे हैं कि जो सिर्फ नाम के पीएचडीज हैं, उनको कख नहीं पता इंडस्ट्री का। ठीक है ना, कर कर स्टैनफोर्ड से कर कर आ जाएंगे, लेकिन के मतलब लेकिन वो दे विल नेवर टच अ रियल राउटर कि वो कैसे चल रहा होता है। तो ये चीज होती है, तो वही चीज आप देखिए, जो मेरा जितना काम है मैंने रियल ट्रैफिक पे काम किया सर, इसीलिए मेरे 6 आई डिड माई पीएचडी इन 6 ईयर्स, मेरे 6 साल लगे। नॉर्मल 3 था, यूके बेस्ड पीएचडी जो होते हैं, यूके में पीएचडी फीस आपको बताया कितनी होती है, तो वो कितने लोग हैं, तो मतलब आई डिड माई पीएचडी इन 6 ईयर्स, ठीक है ना। तो उसमें बहुत लंबा एफर्ट मुझे लगा, लेकिन इससे फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे प्रैक्टिकल चीजों का आइडिया हो गया। सबसे ज्यादा मुझे एक इंडेस कंपनी है, डैक कार्ड का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। डैक कार्ड का कभी आपसे तस्का करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है डैक कार्ड। तो वो बहुत अच्छी, तो खैर कभी इट्स वेरी गुड टू टॉक टू यू, और एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑलवेज अप्रिसिएशन। मैं तो चाहूंगा कि आगे कोर्सेज के अंदर मैं मजीद चीजें लेकर आऊं जो कि इस कोर्स को और मतलब मेक इट सर मोर इंटरेस्टिंग। वी लव टू लिसन यू। आप अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं डेफिनेटली हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है, और हम चाहेंगे कि आपके ऐसी जो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में और आपने अब्रॉड में माशाल्लाह काम किया है, तो वहाँ पे जो इनोवेशंस और एक्सपीरियंस है आप इसी तरह शेयर किया करें, तो हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल होता है। और इनफैक्ट हम भी कोशिश ये करेंगे कि जहाँ हमको आपकी इस इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो आपने की है, एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसको प्रेजेंट करें, आपको कहीं इनवाइट करें, हाँ डेफिनेटली वी नहीं, विल डू इट। यही तो हम चाहते हैं कि क्योंकि एज अ इन दिस केस आप लोग मेरे बने इवेल्युएटर। मेरे जो मेरी पूरी, इट्स नॉट मी, मैं तो इन्हीं के सिर्फ एक बंदा नहीं हूँ। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी आए एनडी आए तो मेरे पास पूरी टीम है, मैंने एक पूरी टीम बनाई है। क्योंकि मैंने सीखा है कि जस्ट डोंट डू अ सोलो वर्क। मेरे पास इतनी टैलेंटेड टीम बैठी हुई है। मैंने मेरिट पर मैंने पूरे कराची से, पूरे सिंध से मैंने मेरिट पर टीम हारी। मेरे पास 12 बच्चों की टीम है। मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से, मैंने मेहरान से, मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से, मैंने पीएफ कीट से, जो लड़के मेरिट पर आए मैंने हायर किए हैं। मैंने अपने पास, मेरे पास 12 है तो 14 फुल जॉब। हमने पूरा आईबीएम कंपैटिबल, क्यू डार कंपैटिबल, हमने पूरा सीम बना हुआ है। वी आर ऑन इट, वी आर डूइंग थ्रेट इंटेलिजेंस वर्क, वी आर डूइंग डीएलपी प्रोटेक्शन, डीएलपी सोल्यूशन पूरा बना लिया हमने ऑलमोस्ट। स्टॉक एक्सचेंज हमें ऑर्डर दिया, फायर इंटीग्रिटी मॉड्यूल फिम, वो हम बना रहे हैं। तो ये चीजें तो आप हमें मौका दें, बिल्कुल वी विल ट्राई टू प्रेजेंट एवरीथिंग। अपनी वेबसाइट भी बना रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, उस पर भी आप लोगों को चीजें मिलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन, और जस्ट विजिट मी एनी टाइम, सर और इनवाइट जब आप चाहते हैं, हम तो एनी टाइम हाजिर हैं भाई, हम तो इस काम के लिए जब भी आप अपने बात सर में वी मिले विल मैंने मिलता है। इंशाल्लाह, I'll update you very soon। हम्म, हम्म, सर आपने एक इंटरनेट ट्रैफिक मॉडलिंग का एक अलग आर्टिकल रिसर्च पेपर जो जी जी, है सबमिट किया था आई हम्म, ट्रिपल ई में। ये तो आपने जो शेयर किया हमसे जी वो जी, वीबल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से था। एक हम्म। अलग एक पेपर था, आईएल था, मैं 2-3 दिन पहले चेक कर रहा था, तो उसका जो टाइटल था इंटरनेट ट्रैफिक मॉडलिंग, तो क्या वो आप यहाँ शेयर कर लें उनसे? आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा वो? नहीं एक्चुअली वो जैसे हमारी जो एनडी क्लाउड की जो आईडी है, हम्म, तो ये इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो उसको क्या, मतलब अगर आई ट्रिपल ई का जो रिसर्च नहीं नहीं पेपर नहीं, हम करना मैं चाहें। आपको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसका तरीका है साई हब, इसका तरीका इसका चीट तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ। ये चीट तरीका ये है, क्योंकि अगली से ये सारे पेपर सब्सक्राइब पेपर हैं। मैं मैंने एक शेयर की वेबसाइट मिल गई आपको, मैंने ना नीचे लिखी है चैट में। इसमें ना वो मेरे पेपर का लिंक है ना, कि कोई भी पेपर आपको चाहिए वो लिंक कॉपी कर दो, ये लिंक कॉपी कर दो, पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब
अच्छा ये जो है ना, ये नीचे जो डॉट, ये ना ये वेबसाइट ब्लॉक होती रहती है। डॉट एस सी है तो कभी डॉट सी सी हो जाती है, कभी डॉट बी हो जाती है। तो साई ऐप का एक्टिव लिंक आपको गूगल पे मिल जाएगा, कि आप लिखिएगा सर एक्टिव लिंक ऑफ साई ऐप। क्योंकि ये भी मैंने भी आपने बोला तो मैंने निकाला है। इससे पहले चल रहा था साई ऐप डॉट टी डब्ल्यू चल रहा था, वो बंद हो गया। अब साई ऐप डॉट एस सी चल रहा है आजकल। तो इससे ना ये वेबसाइट का ना ये साई ऐप डॉट के बाद चेंज होता रहता है। वो निकल आपको मिल जाएगी चीज। जो पेपर है ना आपका, चाहे कॉन्फ्रेंस है चाहे जर्नल है, कोई भी डाल दो निकल आएगा। यानी कि आई ट्रिपल लिंक निकल आएगा, निकल आएगा, पेपर पूरा आ जाएगा। आप बस पेपर का लिंक निकाल लो, जो आप कह रहे हो ना आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, वो लिंक यूआरएल कॉपी कर दो इसके अंदर, वो मिल जाएगा आपको। वरना अगर नहीं मिले तो आप मुझे बता दो, मैं आपको भेज, मेरे पेपर मेरे पास तो है ना, मैं आपको भेज दूंगा आपको मैं। थैंक यू सर, ठीक है ना? थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड डिस्कशन, वेरी नाइस टॉकिंग विद यू ऑलवेज। मैं तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, एंड ऑलवेज वेटिंग फॉर योर फीडबैक प्लीज। ठीक है, Thank you, sir. You are doing a good job. Take जी care. अटेंडेंस लगा लीजिए जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. अटेंडेंस लगा दूंगा, अटेंडेंस की परवाह ना करें, वो हो जाएगी। थैंक यू, you can leave the class now, thank you। So it's 9:17, I am supposed nobody is there, so I'm also leaving, thank you। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर।